on silk protein derived wound management solutions called Fibrohil Wound Care Private Limited. Fibrohil is working in various wound continuum and addresses to different types and stages of wound through their IP protected technology. Fibrohil is first company from India and few in whole world to be leveraging the biomaterial, that is non-textile application property of silk and silk proteins to heal different types of acute and chronic wounds. Under Sir's leadership, Fibrohil has won several titles, which are winner of Elevate 100, one of the most innovative biotech startups organized by Department of IT, Biotechnology, and ST Government of Karnataka. Winner of Starter of the Year under Smart Bio Awards 2020 during Bengaluru Tech Summit 2020. Winner of National Technology Award 2020 for startup organized by Technology Development Board, a statutory body under DST. Winner of Best IP Management MedTech Startup during Biopharma World IE 2021 Bio Startup Awards, and finalist of National Startup Awards 2020. So now with this, I would like to welcome Vivek Mishra sir to deliver his talk. Please sir, over to you. Thank you, Karsa, and good evening, everyone. So I think this is second or third discussion which is happening on this platform. And I'm glad for this opportunity. Thank you, Karsa and whole team for having me, on this platform. So before, I start, one of the important aspects is agri is one sector which contributes a lot to the national GDP, as well as it is something which is not fully explored and exploited yet. So Krishi is the area, as the name suggests, Krishi Manthan. So this is an area, where a lot of things can come out of it. And I have been fortunate enough that I have been doing something which is related or a byproduct from agri-related field, what is called sericulture. So that is one area, you all must have heard about silk and resam and silk saris and other kind of things. So what happens is, generally there is before I get into my presentation, I wanted you to, get to know a little bit about silk. Many of you would have heard about silk saris, silk, suits and other kind of thing. But how silk is obtained? So generally there is a worm, silkworm, which eats mulberry leaf. Hindi mein mulberry leaf ko sehtoot bolte hain. The worm eats mulberry leaf, it grows, and then it spins a cocoon around it. So the worm stays inside a cocoon. There are 4 types of silk which is available mostly. One is Eri, second is Muga. Eri and Muga are mostly found in northeastern part of India, particularly Assam. Then third is Tassar, which is hunted silk, part of Chhattisgarh, Jharkhand or other areas. It is hunted on the tree. It's called Tassar silk. And fourth is mulberry silk. India produces about 35,000 metric tons of silk, and out of which 60% of that is produced in Karnataka. And in whole of the country, sericulture, which is part of, related to textiles and agriculture, they employ directly and indirectly about 80 lakh people. So these are some of the fantabulous numbers to also make you aware, that what all the possibilities and opportunities which exist in each one of us, in front of us. And one small piece from that I have taken is developing a medtech, medical devices and wound healing company out of silk protein. And that is what is called Fibrohil. And that's my venture, which I started in 2017. So with this background, I will just share a slide. Let me know once it is visible. Is my screen visible to each one of you? Yes, sir, it is visible. Okay. Fantastic. Yeah, I think Ravi Prakash has raised a hand. If anything is there, or I will start. Yes, sir, we can just take the question answer toward the end. Yes, sir, you can start. We can take the question answer session later. So we are the first company who are pioneers in non-textile biometrical application of silk proteins. We are winners of Elevate 100, which is a flagship program of Karnataka government,
to identify the top innovation which has potential to impact many lives, the country, bring down the import substitution and other kind of thing. We were also winners of National Technology Award, and that's how we have these are the people who have supported us. We as a company are working on leveraging the biomaterial property of silk proteins to develop various innovative wound solutions and address various types of wounds. And why did we choose silk? Because silk is something which has economic multiplier potential. When you start any company, if you are clear why I'm starting a company, what is the problem I want to solve, why I want to become an entrepreneur, what is the end goal, that's when you get the purpose. And the purpose of our venture was to solve a genuine problem of acute and chronic non-healing wounds. When we say acute and chronic non-healing wounds, it means diabetic ulcer, bed sore, pressure ulcer, or cesarean C-section. You might have heard all these cases. And sometimes it gets bad and, the quality of life gets affected. If it becomes infected, chances of septicemia happens and many times death. So all those kind of things, you wanted to address with wound healing. And silk protein is one such, ingredient which is having potential to be an economic multiplier. The benefit is silk growing farmers, the patients, the hospitals, load on the nursing staff, hospital doctors, and ability to generate employment. That makes it a wonderful molecule or wonderful compound, what can be taken. And a lot of products can be developed. What you see in the picture is a cocoon, which has two proteins. You can see in the third image. The outer layer is sericin, inner layer is fibroin. The outer layer, sericin, has excellent cosmetic properties. That's why it is used in cosmetic industry. And you will find many moisturizer, hair cream, and companies like Fab India also use silk-derived sericin for their cosmetic range of products. So that is one part. Second part is fibroin, which is the inner, and that has excellent wound healing property. We utilize fibroin to heal different types of wounds. That's why the name of the company is called FibroHeal, healing through fibroin. These are some of the awards and recognition. We were winner of National Technology Award in 2020, organized by the Technology Development Board under Department of Science and Technology, Government of India. Startup of the Year during Bangalore Tech Summit, one of the most innovative biotech startups, finalist of National Startup Awards. These are to name a few. Now, these are some of the introduction, how we started, and then we got patents. Right now, we have got about 8 patents in hand, 6 in hand, 2 and almost in the process of getting, obtaining another 2. Apart from that, we got the license to, because since it was a new science, silk has never been used, for various applications in wound healing. So it was a new science. We got the license in 2020. We created the in-house manufacturing license, and right now the products are out in the market. One of the important aspects when you are building a company or building a business or solving a genuine problem is to identify the problem. When we started with silk, we identified that what is the problem. The problem was difficulty in healing or slow and complicated wounds. I mean, healing time of slow and complicated, were slow in case of complicated wounds, increased hospitalization cost due to longer hospital stay, decreased quality of life during ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, और ये सारे फैक्टर्स थे जो जिसको हम लोग ध्यान में रखते हुए वी चूज द मटेरियल सिल्क, क्योंकि सिल्क एक ऐसा इंग्रेडिएंट था जो कि सारी चीजों को एड्रेस कर रहा था, एंड दैट्स वेयर इट बिकम्स द परफेक्ट कैंडिडेट टू टेक टू द नेक्स्ट लेवल. So based on these problems, we identified silk, which was completely biocompatible, non-allergenic, non-cytotoxic. It allows air permeability, promotes healing. It has high tensile strength, provides scaffold for tissue regeneration, cell proliferation, and it can be heat sterilized. It is cost effective and efficient in its healing process. और ये सब देखते हुए, based on that, we derived various products which will be able to address things related to wounds. For that, we decided a model, what we call TIMES model. TIMES model is also, like a finger. If you can see me, you will see that I'm highlighting a finger that talks about 5 things. Most important thing is tissue debridement. That is things where you have gangrene like lot of slough and other necrotic tissue around. Second is infection and inflammation, when the wound is red or it is little warm. Third is moisture, ensuring that itchiness, when the wound is healing, normally itchiness happens. Fourth is epithelialization, and fifth is scar. And right now we have product range addressing to all these stages of wounds, and that's why we can become a comprehensive wound care company.
These are some of the products which are already out in the market and used in various hospitals. Right now, more than 800 hospitals across the country are using our products. Right, we are impacting more than 1,000 farmers who helps in sourcing and getting the material. And we have directly, indirectly employed more than 150 people. So those are some numbers, which feels really happy when you look back that when I started in 2017, we never thought of these things. It was just that let's solve a problem. And slowly, log judte gaye, karwa banta gaya kind of. You see that, things are happening. And right now, it's a happy feeling that what we started the journey today, 800 hospitals are using the products. Many people limb has been saved. कई जगह जो diabetic ulcer में पैर काटना पड़ता है, वो भी कई जगह हमारे products यूज करके बचा हुआ है. So all these things, gives lot of confidence, lot of happiness that an agri-derived product from sericulture, silk cocoon, that has been, translated into a product which is approved by the necessary regulatory bodies. And then, it is used in almost 800 hospitals. More than 50,000 patients have been treated. So all these are immense numbers, when you look back upon the journey. These are some of the new range, which is particularly relevant to cesarean or any other type of where suturing is needed, trauma wound suturing and other kind of things. So these are the post-operative area what we have recently introduced about a year back. Here I'm talking about very early couple of cases which I have personally done. You can see in the first image, that's a donor site. Donor site वो होता है जहां पे आप एक थाई के या उस रीजन से एक स्किन का टुकड़ा लेते हो और दूसरे पार्ट पे लगाते हो. आप देखो कि वहां पे हमारा पहला प्रोडक्ट यूज हुआ है, दैट इज फाइब्रोहिल पैच और फाइब्रोहिल सीट. और यू कैन सी विद इन 4 days हाउ इट हैज हील्ड. और सेकंड केस में एक लेडी 70-year-old लेडी, उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस था एंड लेग वाज सपोज्ड टू बी एम्पुटेटेड. आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हो. एंड ओवर ए पीरियड of about 5 months, आप देख सकते हो कि पैर में हेयर रिग्रोथ भी हुआ है. Based on these things, we can say that fibrohil range of products, which is derived from silk, heal the wound with 40%, more than 40% efficiency compared to existing solutions, which helps in improved outcomes and improved quality of life during treatment. ये सारे factors काम करते हैं. And you can see this is how things work. ये देखिए रामनगरा मार्केट है यहाँ का, वहां में this is how these are farmers, who sell cocoons and various things. ये cocoon है. You can see in office, you can see me also, Then we have a small team. This is an old photo, and based on that, those products are formulated and that are being used in solving problems. These are some of the societal impact what we have created. That is sericulture, farmers and silk industry, which is on the farming side, and second is on the wound care side. Silk is one material, which is impacting both the sides. India produces more than 33,000 metric ton per annum, about close to 10,000 metric ton mulberry in Karnataka. And it provides jobs to 10.6 lakh people in India, Karnataka, and more than 80 lakh people across the country. Large amount of silk gets wasted in reeling, weaving, and this can be used to develop a lot of cost-effective, innovative wound healing solutions or cosmetic products or other kind of things. And if non-textile application of silk gains traction, इससे किसानों की अर्निंग्स बढ़ेगी. गवर्नमेंट इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट डबलिंग द फार्मर्स इनकम. वो बोलने से नहीं होगा, कुछ सोल्यूशन लाने से होगा. एंड दिस सिल्क कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच कैन हेल्प इन एनहांसिंग द फार्मर्स इनकम एंड कैन इंप्रूव द इकोनॉमिक्स ऑफ सिल्क प्रोडक्शन. ये हुआ आपके सेरिकल्चर फार्मर्स और सिल्क इंडस्ट्री के साइड में. कमिंग टू द एप्लीकेशन और ट्रांसलेशन पार्ट, wound care is one such area, where affordable and cost-effective products for the patients can be brought. It lowers the hospitalization cost, reduces the duration of hospital stay due to faster wound healing. Minimal dressing changes is required, जिससे कि nursing staff का time और doctors time और COVID time में हमने देखा how scarce it is for medical fraternity to give time. And in the process, it also increases the quality and longevity of life of the patient. So ये सारे factor की वजह से it has huge impact. And definitely this is a material where next 50 years का भी research इस पे हो सकता है, because this holds that kind of potential. It's an amazing material, and it is at a very nascent stage. Silk is at a very nascent stage, particularly the non-textile applications. So अगर मैं summarize करूं, तो utilizing as a company what we are doing, we are utilizing silk to heal different types of acute chronic wounds. We are very well respected in medical fraternity due to our strong scientific research and product performance. And we are promoting the concept local for global. Made in India for the world. So local for global is something which we are promoting. Our aspiration is to be the most comprehensive wound management company from India,
catering to the entire continuum of different type of wound. कैसी भी body में चोट लगती है, घाव लगती है, cut होता है, fibrohil should be the one who should be able to address it. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वैलिडेट कर दिए, 50,000 पेशेंट से ज्यादा यूज हो रहा है ऑलरेडी, 800 हॉस्पिटल से ज्यादा 800 से ज्यादा हॉस्पिटल्स यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, एंड दिस गिव्स अस इमेंस सेटिस्फैक्शन. वी हैव अ स्ट्रांग स्टेबल लीडरशिप मैनेजमेंट टीम और सारे अप्रूवल्स ऑब्टेन हो चुके हैं. हमारी नई फैक्ट्री भी आ रही है विच विल बी अबाउट 7x मोर कैपेसिटी देन व्हाट वी हैव टुडे. सो with this, I wanted to summarize. I will show a couple of other images, and then I will prefer it, having a more Q&A, जिसमें आप लोगों के जो भी doubts, question हो, I will be happy to take questions and address that. एक example देखिए, this is a case, which was a bike silencer burn. You can see from day 0, day 3, day 6, on day 9, you can see one of the dressings, what they're using, and day 15th, you can see the case. This is how you create the impact. The yellow layer, what you are seeing, is silk fibroin layer on a patch. This was case of a amputated diabetic foot at AIMS Trauma Center, Delhi. You can see day 0 जब 2 उंगलियां कट चुकी हैं, और day 12 में देखिए घाव पूरा almost भर चुका है. So these are some kind of impact, what we have created using a material silk. और इसीलिए कहा गया कि there is lot of hidden gems which are there in agri segment. अगर हम उसे सही से खंगालें, if we actually try to make a lot of difference, lot of possibilities are there. And having worked in agri sector, having worked in with one of the Tata Group companies where I was leading hybrid rice seed business, I can say that agri is the sector to be, and agri is something, जिसके अगर आप translation part में देखें, so there is huge potential. Only thing is someone coming forward, taking responsibility and making things happen. So with this, thank you very much. I'm open for Q&A if anything is there. I'm happy to take Q&A. Dear participants, chat box is open, and all the participants, if you want to ask any question or you want to interact with us, you can directly interact. Kindly unmute yourself and you can interact. So I can see Gomti has asked, why and how do you choose silk? मैं छत्तीसगढ़ में, आई वॉज वर्किंग फॉर टाटा ग्रुप कंपनी. मैं छत्तीसगढ़ में एक जगह पे घूम रहा था जिसका नाम है धमतरी. दैट इज अबाउट 100-120 किलोमीटर फ्रॉम रायपुर. एंड as I was roaming around, I saw a cocoon. And when my background is farm, I'm a B Farm and MBA. और छत्तीसगढ़ इज नोन एज राइस बाउल फॉर इंडिया, राइस बाउल ऑफ इंडिया. तो वहां घूमते हुए जब मैं देखा था, तभी से हमें काफी इच्छा थी आने की. एंड लेटर ऑन व्हेन वी read various papers, there were we found that this material has wound healing property. And once we dig deep, we realize that a lifetime can be dedicated to silk and its application, and that's how हमने फाइब्रोहिल 2017 में रजिस्टर किया. And we are here today. The story what I shared. And एक और चीज मैं आपको सरप्राइजिंगली बोलूंगा कि फाइब्रोहिल इज केस स्टडीज डिस्कस्ड इन हार्वर्ड इन देयर क्लासेज एज ए मैनेजमेंट लेसन ऑफ स्ट्रेटेजी, कि हाउ ए actual impact happens. So अगर आप गूगल में आप करेंगे कि फाइब्रोहिल हार्वर्ड केस स्टडी, you will be able to find it. If you simply search it on YouTube and other areas, you will be able to see what is the background, how did we get to all of this. So thanks, Gautami. I hope I have addressed you. And if anything is there, you can connect to me on LinkedIn or any of the other social sites. I am available on most of the social sites. All you have to do is search Vivek Fibrohill. You will be able to find me. Sir, we are happy that you have shared good knowledge for us. Thank you for your presentation and all. Really, it's a wonderful product that you have developed for your initiation and all. We are congratulating you. Thank you, sir. Please help us in, we are from Andhra Pradesh, Right. where the silk worms are more grown in this area. Correct. If you can help us here, we can also do something here for the silk farmers. No, definitely. There is always a win-win situation which can be created. Right now, my consumption is very, very low. But however, I try to help from people, and definitely I will be happy
you connect to us, we'll be happy to work out what way we can do. And in whatever way we can associate, take things forward, happy to take it forward. Can you give your something, sir, whatever your... In Google, you search Vivek Fibroil, you will find everything about me. I'm very easy to, locate. Thank Vivek you, sir. Fibroil, Thank Yeah, you sir. search. Sir, just a small question. Yeah, Sir, Saransh. basically, I am a BSc agriculture student, and I want to ask that you have worked on silk and get its medical purpose use. I want to ask that what are the other areas other than silk that Yeah, we can Saransh, put? आप agree से हो? Even a banana, if you put it in the market normal, banana 3 से 4 दिन में खराब हो जाता है. If you dip it in silk fiber oil, it will last for 8 to 9 days. So even it has preservative property for foods. आप एग्री से हो तो वो मैंने बताया, आप गूगल कर लीजिएगा ये चीज. सिमिलरली बहुत सारी चीजें हो सकती है, कॉस्मेटिक्स पे आ सकता है. इवन जो अगर आपने देखा होगा तो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उस पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो करेंटली इंपोर्टेड तरीके से की जाती है. उस पे भी सिल्क फाइब्रोइन कैन बी यूज्ड इन सम वे इन दैट इंसेमिनेशन वाला. इवन इफ यू दैट द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन. इफ यू गूगल इट Yes, यू sir. विल गेट इट. सारांश, थोड़ा सा सर्च करो. देयर आर enough areas and enough opportunities which are lying vacant in the area of silk and various other ingredients. So hope I have addressed your question, Saransh. Okay, sir. Okay, got it. Yeah. Any questions? Any more questions from anyone? I'm happy to address. You can ask anything, whatever you want to ask. Sir, one more question. Sure. Other than silk, what are the other products that can provide us medical purposes uses other than बहुत silk? सारी चीजें हो सकती है. आप सबने इसबगोल का नाम सुना हो. इसबगोल के बेसिस पे कुछ नया बना दो. इसबगोल इज नोन फॉर लूज मोशन, एवरीवन नोज दैट. बट उसके ऊपर आप कुछ अलग बना सकते हो. आप सबको पता है कि केले के ये पपाया का जो पत्ता होता है दैट इज यूज्ड इन डेंगू, एंड बेस्ड ऑन दैट मेनी कंपनीज हैव क्रिएटेड पपाया का केरिया पपाया की कैप्सूल्स. सो दैट्स हाउ जस्ट be little clear and around yourself, find out and create a solution. And I'm sure as a young guy who's studying BSc Agri with high energy, you will be able to find many solutions from the Agri. याद रखिएगा कि जो मिट्टी आपको देती है उसमें बहुत सारा पोटेंशियल होता है. जो कृषि विज्ञान है वो बहुत इंपॉर्टेंट विज्ञान होता है, और अगर आप उससे आगे कुछ निकालते हो तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू आउट ऑफ इट. करेक्ट? Okay. Okay. Sir. Excuse me, sir. यस प्लीज. सर माय नेम इज कपिल एंड मैं यहाँ जम्मू से PhD फर्स्ट ईयर में हूँ सेरिकल्चर में. अच्छा, सर आपके साथ कोई ऐसे प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन हो सकता है रिसर्च में आपकी कंपनी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. बढ़िया सजेशन बताइए, क्या कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं. हम लोग खुशी खुशी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. जी सर. हम भी तो तो उसी देखते हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम बताएं जो कि हमें नहीं पता है. दुनिया की सारी चीजें तो हमें नहीं पता है. आप जैसे यंग लोग जो देश के फ्यूचर हो, यही लोग बताओगे कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. बिल्कुल एग्रीएबल है सपोर्ट करने के लिए. बहुत सारे बायरेक और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं. एग्रीकल्चर पे स्पेशल फोकस हो रहा है. जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में बहुत सारे गवर्नमेंट के फंड्स जा रहे हैं. आप ये सब एरिया में देख के काफी कुछ एड्रेस कर सकते हो कपिल. जी सर. तो आप बायोटेक्नोलॉजी, एग्री और ये सब रिलेटेड में काफी कुछ हो सकता है, और हम लोग हमेशा सपोर्ट के लिए, कोई भी अच्छा कॉन्सेप्ट उसके सपोर्ट के लिए हम लोग आगे हमेशा रहते हैं. ठीक है सर. तो सर मैं आपसे लिंक्डइन से तो कनेक्टेड हूँ वैसे ऑलरेडी, तो आपको वहीं पे जो भी आगे फर्दर डिटेल्स हैं जो भी है डिस्कस वहीं कर सकते हैं सर. करेक्ट, आप कनेक्ट हो सकते हैं, कोई जी प्रॉब्लम सर. नहीं. ठीक है, थैंक यू सर. ठीक है, थैंक यू. Anyone else who want to interact with the sir or ask any question or ask anything about any project? Sir is very much supportive. So आप you लोग can ये मत ask भूलो him. कि एक समय हम भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट थे. बस हमने एक चीज किया था कि हमने क्वेश्चंस ढेर सारा पूछा था, जिससे मैं क्वेश्चंस कभी वापस अपने घर लेके नहीं जाता था. मैं हमेशा क्वेश्चंस पूछ लेता था. नतीजा आज फाइब्रोहिल हुआ. तो इसीलिए मन में क्वेश्चंस नहीं रखने का. डाउट हो पूछ लेने का सर डायरेक्टली. जितनी जल्दी आप पूछ लोगे उतनी जल्दी आपका एड्रेस सॉल्व हो जाएगा. कुछ भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, ये नहीं सोचने का कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. इफ यू हैव लिटिल बिट आल्सो डाउट, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, जस्ट आस्क. डोंट बॉदर अबाउट व्हाट अदर्स विल थिंक. सर एक हमारी टीम का क्वेश्चन है आपके लिए.
बिल्कुल बीइंग एज एन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं इससे रिलेटेड। करेक्ट। तो इसको बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर और बीइंग एज एन फाउंडर, हाउ मच इट इज डिफिकल्ट टू कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ वी कैन से स्टार्टअप और कंपनी, क्योंकि आजकल बहुत हर एक ही सेक्टर हमारा क्लटर्ड है। तो इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी भी है, मोदी जी बता रहे हैं। तो इस टाइम पे हमें अपनी रिसर्च पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे हम सब मिलके काम कर रहे हैं, बट इस टाइप की कंपनीज को सक्सेसफुल बनाना और अपने यंग माइंड्स को साथ में लेके चलना, तो ये आपकी जर्नी कैसे रही, कैसी, क्या क्या डिफिकल्टीज आई? तो आप कुछ भी उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहें, कुछ कोई इंसिडेंट और समथिंग? नहीं, बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूंगा। हमें शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें लगा था कि सबसे मुश्किल काम होगा फंड रेज करना, पैसे लाना, लोगों मतलब प्रोडक्ट बेचना, लोगों को कन्विंस करना कि नया साइंस कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। बट ट्रस्ट में जो सबसे बड़ा परेशानी मैंने फेस किया वो लोगों का ईगो मैनेज करना है। लोगों को उनके कुकून से बाहर लाना और इंश्योर करना कि लोग आपके साथ उतने कंफर्टेबल होके जुड़े कि वो आपसे बातें कर सके, पूछ सके, अपनी प्रॉब्लम समझा सके। और यही रीजन है कि कई बार इवन अगर आप लोग कुछ लोग जो आप लोग फाइब्रोइल के पेजेस फॉलो करते होंगे वो देखे होंगे कि कई सारे जो हमारे वर्कर स्ट्रेंथ फेल भी हैं उन्हें भी कई बार इनोवेशन अवार्ड कंपनी देती है, ताकि वो अपने तरीके से ही जो सॉल्व करें। जरूरी नहीं है कि कुछ बड़ा करने के लिए आपको डिग्री या कुछ बड़ी सी वो चाहिए होती है। दूसरी चीज, जब आप कुछ भी करते हो और आपका इंटेंट क्लीन होता है, रास्ता अपने आप वर्कआउट हो जाता है। सो ट्रस्ट मी, जो जो मैंने प्रॉब्लम सोचे थे, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ जो व्हाट दे कॉल इट मैन मैनेजमेंट। कई लोग जो मैनेजमेंट से उन लोग एग्री करेंगे, मैन मैनेजमेंट, उससे हमें सबसे ज्यादा चैलेंजेज हैं। बट अदरवाइज, और एक और जो तीसरी चीज आती है, सारे लोगों को एक साथ अलाइन करके रखना फॉर ए कॉमन विजन दैट लेट्स मेक ए सिल्क प्रोटीन कंपनी पॉपुलर, लेट्स इंश्योर दैट सिल्क प्रोटीन एज ए कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्टेड एंड बी द फर्स्ट कंपनी एंड पायनियर्स इन सिल्क प्रोटीन इन द वर्ल्ड। वो जो कॉन्सेप्ट लेके और सबको अलाइन करना ऑन ए कॉमन गोल एंड मेकिंग इट हैपन, वो सबसे ज्यादा लोड मेरे पे उसका लगा। और that was one of the reasons, मतलब फाइब्रोइल has been successful because I was fortunate to have a team जो बिलीव किया उस पे। और उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि देखिए 30s में मेरे सारे इधर के बाल सफेद हो गए। लाइटर नोट, तो यही होता है, दिस इज हाउ यू बिल्ड द कंपनी। ओके सर, आई ओके, होप आई थैंक हैव यू। एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। उसके अलावा सर एक दो कुछ और क्वेश्चंस थे हमारी टीम से, लाइक श्योर श्योर, आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए। नॉर्थ इंडिया में जैसे आपने पंजाब का कुछ केसेस भी सुने होंगे। करेक्ट। पंजाब में बठिंडा साइड से एक पूरी कैंसर ट्रेन बोला जाता है उसको, तो हाँ बठिंडा से वो चलती है राजस्थान साइड, और हाँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं। और जितनी ये पूरी मालवा बेल्ट जिसको बोला जाता है पंजाब की, तो हाँ, वहाँ के वाटर में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, जिस वजह से लॉट ऑफ पेशेंट्स, हम कह सकते हैं, कैंसर के अभी शिकार हैं, होता है। शिकार हैं। तो आपकी कंपनी ने वहाँ पे कुछ कोई सेटअप या कुछ आपकी एज इन लाइक कुछ ऐसा क्रिएट करा है ताकि डायरेक्टली पेशेंट्स को हेल्प मिल सके, या कोई मेडिकल, लाइक अभी पंजाब गवर्नमेंट कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स एंड ऑल कुछ अपना कर रही है, तो गवर्नमेंट के साथ मिलके भी आप कुछ कर रहे हैं ऐसे कि डायरेक्टली हम पेशेंट्स तक जा सकें? बिकॉज इंडिया में जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर की दिक्कत है या प्राइवेट सेक्टर की, प्रोडक्ट्स हम बना लेते हैं, एग्जीक्यूशन टू द ग्राउंड लेवल इट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन इंडिया, बिकॉज करेक्ट। इंडिया की हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि एग्जीक्यूट करना उसको बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है सर। तो उसमें जैसे पंजाब की ये बेल्ट है या और भी कुछ राजस्थान के एरियाज हैं, ऑल इंडिया कुछ होंगे ऐसे एरियाज, तो उसमें आप कैसे काम कर रहे हो? तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है आपको सरकार के साथ मिलके करना होता है काम। और जब भी आप सरकार से मिलके काम करते हो तो आपको दोनों कई जगह बहुत अच्छा फीडबैक भी मिलता है, जहां सरकार प्राइवेट से फास्ट है, और कई जगह आप जो टिपिकल सरकार जिसके लिए जानी जाती है, दोनों आपको एक्सपीरियंस होता है। आपको इसके लिए कई सारे जगह पे जो उसके सीएचसी और पीएचसी होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और कई सारे मेडिकल कॉलेज होते हैं। नॉर्मली नए रूल में हर कोई चाहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जरूर होता है। तो आपको उनके जो डीएमई बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, या डीजीएचएस बोला जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो होता है, उसके थ्रू आपको प्रोडक्ट को इंक्लूड कराना होता है जब आप उन जगहों पे जाते हैं। और उन जगहों से ये एड्रेस किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये जो आपने प्रॉब्लम हाईलाइट की वो बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कई जगह पे प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। और एक और चीज ये बता दूं आपको कि कई जगह पे ऐसा जगह है जहां पे हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है,
कंपेयर टू पॉपुलेशन, और कई जगह ऐसा है जहाँ पे कई किलोमीटर तक हॉस्पिटल्स हैं ही नहीं। तो इस केस में आई एग्री कि वो मिसमैच है, लेकिन इसके लिए आपको गवर्नमेंट से मिलकर काम करना पड़ेगा। कई सारे जो CSR फंड्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के, उनको यूज करके ये सब सेटअप करना पड़ेगा। और आपको बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए उसके लिए, इवन आप नॉर्मल केस में जो आम जनता, आम लोगों की जागरूकता होती है उससे भी एड्रेस किया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि कई जगह पे कंसल्टिंग के लिए आजकल वीडियो कंसल्टिंग अवेलेबल हो गई है। वो सारे फैक्टर्स होते हैं, बट जैसा आपने बताया कि वी कैन ऑलवेज लुक एट एड्रेसिंग इट, बिंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। एड्रेस किया जा सकता है। अभी तक एज ए कंपनी हम 6 साढ़े 6 साल पुरानी है, तो हमने कुछ स्टेप्स जहां तक हो सकता है किया हुआ है। अभी हमारे पास काफी लंबा रास्ता हमें तय करना है। तो इन द जर्नी जहां भी हमारे एंड से कुछ बन पाएगा वो हम लोग डेफिनेटली करेंगे, जहां भी हेल्प सपोर्ट लगे हम डेफिनेटली करेंगे। बट यही है अभी हमारी तरफ से, मैं इतना ही बोल सकता हूँ अभी फिलहाल। ओके सर, ओके, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स, आपके कोई क्वेश्चंस हों, यू कैन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम द सर। सर, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, किसी ने पूछा, व्हाट इज द प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी? What is the procurement strategy of the company? Procurement of silk protein? सर ये नहीं उसने लिखा हो Yes, तो sir. ओके। Yes, sir. Procurement of silk protein, sir. Yes, sir. I'm Yashaswini Gargav, sir. I'm Okay. a MBA. I'm pursuing MBA in Agriculture Operations Management from Symbiosis Institute. Where And it was, yes, sir, it in was my question because silk industry is always already like very unorganized. correct. And to have like the correct raw material and good quality raw material is like very important. So that's why I asked the question. So that, but I appreciate your question, Yashaswini, that you have touched the right chord. India produces 35,000 metric ton. I'm glad that you thought on those lines. इंडिया में अगर आप देखिए इतने सारे फार्मर्स जो उगा रहे हैं, नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जो कुकून होता है उसके अंदर वर्म होता है। वो कुकून क्या होता है, बाद में उसे खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, थ्रेड निकल आता है, और जो कुकून, जो वर्म होता है वो पानी में तैरने लगता है, और उसे फीड की तरह यूज की जाती है चिकन और ब्रॉयलर इंडस्ट्री में। हमारे केस में हम क्या करते हैं, हम कुकून के अंदर से वर्म को निकलने देते हैं। तो हम उतने ही वेजिटेरियन हैं जितना वेजिटेरियन दूध या हनी होता है। तो उस कुकून के अंदर से वर्म निकल गया। वर्म जो होता है वो बटरफ्लाई या मोथ बन के निकलता है, जो फिर आगे चल के मेल फीमेल मेटिंग और एग्स प्रोड्यूस करके नेचुरल डेथ हो जाता है। जो बचता है वो है इम्प्टी कुकून, जिसे ब्रोकन कुकून या कट कुकून कहा जाता है। पियर्स कुकून, कट कुकून या ब्रोकन कुकून। जनरली जो भी कुकून टूट जाता है वो किसानों के लिए वैल्यूएबल नहीं होता है, क्योंकि उससे रीलिंग और वीविंग नहीं होती है। जनरली 700 से 800 मीटर का थ्रेड निकलता है। तो इसीलिए कई सारे जो मार्केट्स होते हैं उसमें से डायरेक्टली लोग कीड़े के साथ वाला, जो सिलिकॉन के साथ वाला कुकून देते हैं। हम उस केस के लिए कई सारे, हमारे 3 स्ट्रेटजी हैं। हम लोग कई सारी कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है जो सप्लाई चेन से डील करती हैं। हम काफी सारे CSRTI, मैसूर, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इन लोगों से भी एसोसिएटेड है। और हमारी डायरेक्ट 1000 फार्मर से ऊपर की डायरेक्ट हमारा खुद का डेटाबेस है, जिन्हें हम पैकेज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने को बताते हैं, और हम उनसे एक सर्टेन दाम पे खरीदते हैं। उससे क्या हुआ कि अगर नॉर्मल केस में उन्हें हुआ कि मार्केट रेट 800 है, हमारे केस में वो कई बार 1800, 1600, 2000 रुपए होता है, जो उनके लिए वेस्ट है। इसीलिए हम कई बार फाइब्रोविल से, कई सारे अपने टॉक्स में हमने ये भी कहा है कि हाउ डू वी क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट, या जर्नी फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ वाला, कि एक जो उसके लिए वेस्ट हो रहा है उसे आप कैसे क्रिएट करते हैं। और हमारे लिए क्यों वर्कआउट होता है, क्योंकि जो उसका मटेरियल हम यूज करते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में यूज होता है। तो आप 1 किलो लिया, उससे सर्टेन नंबर ऑफ आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, सर्टेन यूनिट्स बनेंगे। तो आप उन यूनिट्स पे, आप MBA की स्टूडेंट्स हो तो यू कैन अंडरस्टैंड इट कैन बी सेग्रीगेटेड ओवर दोज यूनिट्स। So that's how we procure it. We have our own system. We have some understanding with some corporates. We also have understanding with government systems like CSRTI, Central Silk Board, Ministry of Textiles, and others. So hope I have addressed your questions to satisfaction, Yashaswini. Thank you so much, sir. That was amazing. Thank you. Hello, sir. Yes, Sir, I have a question, sir. sure, sure. Please ask. So your presentation and your lecture was very nice, sir. So I must congratulate you for that. So my question is, like, just to make, just to take out an idea from the core. Like, I just want to ask, like, what can be the other sources of this kind of protein, sir, like which can be used, these kind of as a human medicine or like that. So what can be other sources, sir, other than this silk protein? So I mentioned about silk protein, which is one part. Now, if you look at various other areas,
we can talk about cellulose, we can talk cellulose, आप सबने cellulose का नाम सुना होगा, कई सारे Yes, parts sir. से use होता है, and agri related ही आता है. We can use on various other materials like chitosan, we can use various other materials which is related to collagen or other kind of things. So material की shortage नहीं है. You have to find an application, do research on that and come up with a product. Of course, it is Okay. not as easy as it is sounding, Yes, or the way I am saying. But अगर आप इंटरेस्ट लेके किसी भी चीज को आप 4-5 साल दे दो ना, वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है. हमने भी जब सिल्क लिया था तो हमें रास्ता क्लियर नहीं था. When you are building a company, when you are building something unique, it's exactly like जंगल में आप जब कैंडल लेके निकलते हो तो आपको कितने स्टेप्स दिख रहे होते हैं? मात्र 1 या 2. Just one. Yes, sir. Just 1 or 2, not beyond that. And once you take that step, 1 step or 2, the next 2 steps becomes visible. Entrepreneurship is exactly like that. आप आज के टाइम में हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अनसर्टेनिटी में भी सर्टेनिटी चाहते हैं. When the life itself is not certain, how can you create certain plans? Entrepreneurship is all about embracing uncertainty and moving to the next step. It's like a candle in the jungle. पहला स्टेप दिख रहा है, ले लो. हो सकता है वहां दीवार हो, फिर आपको वापस आनी पड़े. I don't deny it. बट इसीलिए तो वो entrepreneurship है, इसलिए Yes, तो वो sir. नया है और इसीलिए तो अलग है कि हर कोई नहीं कर पाता. To take that concept, take it forward, and I'm sure that will address it. जैसा मैंने बताया कि कई जगह पे जहाँ पे वो स्ट्रॉ बर्निंग का प्रॉब्लम है, वहां पे कई सारे लड्डूस बनाए जा सकते हैं using various enzymatic methods, and that can be exported out to various countries. हो सकता है solution, but who will take the charge to do it? And that's where I look forward from young people like you, जो टेक्स्ट बुक से जो पढ़े हुए हैं उसका रियल ट्रांसलेट करके when they solve a genuine problem, the country will start flourishing. And that is what we should be looking to address. तो अगर जैसे मैंने बताया कि आप सेलुलोज देख सकती हो, सिल्क देख सकती हो, मैंने एक और एग्जांपल बताया था बनाना वाला कि हाउ लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स. सो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप एड्रेस कर सकते हो. सो आई होप आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चन प्रीति. Very well, sir. Thank you so much, sir. Hello. Yes, Vishal. Sir, my name is Vishal Patel. Yeah, I want to ask you, what are Your voice is not audible clearly. Hello. Yes, I am able to hear you. So I want to know about the competitors of your business. बोल सकते हैं कि other companies जो हैं वो सेम सिमिलर प्रोडक्ट बना रही हैं आपके जैसा, कि आप यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं आपके जैसा, तो वो नहीं बना रहे. करेक्ट. तो हमारे कॉम्पिटिटर्स मल्टीनेशनल्स हैं जो ऑलरेडी हैं हमेशा. देयर इज आल्सो ए वे ऑफ सपोर्टिंग इंडियन कंपनीज, मेक इन इंडिया, वो सारी चीजें हैं. साथ में अगर मैं देखूं कि ये आपको नहीं होता, एट द एंड ऑफ द डे सिल्क पे हम जब शुरुआत किए तो कोई नहीं था. ये मेरे लिए एडवांटेज था कि डिसएडवांटेज था? मेरे लिए बड़ा डिसएडवांटेज था, क्योंकि मुझे मार्केट को एजुकेट करना पड़ा. लेकिन जब एक बार मार्केट एजुकेट कर दो, जब आपके पीछे 5 लोग और आ जाते हैं, तो हु बिकम्स द मार्केट लीडर? You. Yes, you have become the market leader. So that is what we did. And तो कंपटीशन काफी सारा था. I won't deny कि हमारे पहले भी तो घाव ठीक होते थे. लोग नेवा सेल्फ, न्यूरोस्पोरिन, कोविडन, आयोडीन कुछ तो लगाते थे. लेकिन जब तक आपके पास सुटेबल नहीं था, सुटेबल ऑप्शन नहीं. जैसे अगर 1920 में हेनरी फोर्ड ने लोगों से पूछा होता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लोगों ने क्या बोला होता? हमें ऐसी ब्रीड का घोड़ा चाहिए जो बहुत तेज दौड़ेगा. किसी ने कार की बात नहीं की होगी. लेकिन आज के टाइम में देखिए कि आज से 100 साल बाद आज जिसके घर में घोड़ा है वो अमीर है और कार कॉमन हो गई है. That's how life and that's how innovation works. That's how entrepreneurship, innovation and real life works. So what we are thinking today, अगर हम नहीं करें तो हो सकता है कल कोई और करेगा and we become followers. So the best case is if you have doubt, ask question. If you feel like there is an idea which is intriguing you, take a decision, move forward, make it happen. Worst case क्या होगा? फेल होगे ना. फेल होगे तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी. और फेल तो सारे भगवान भी हुए थे. कौन से भगवान सक्सेसफुल हुए थे? सो थिंक इन दैट वे एंड मेक थिंग्स हैपन. टेक स्टेप, टेक इनटू एक्शन. ओके सर, मैं एक तो ये पूछा मेरा प्रश्न कि सर इसको हम सिल्क आपने एक उसके रूप में आता है, इस बैंडेज के रूप में देखा हमने फोटोज में आपके, ये बैंडेज के रूप में आता है. तो इस जैसे कि हम प्लांट के वुंड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लांट वुंड्स के लिए यूज कर सकते हैं क्या प्लांट यूज में, या फिर इसको नैनो पार्टिकल में हम कन्वर्ट करके इसका स्प्रे यूज कर सकते हैं? ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आप सोच रहे हैं? विशाल, वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं. नैनो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, उसमें कई सारी इनकैप्सुलेट कर रहे हैं. अगर आपने फाइब्रोविल का वेबसाइट विजिट कीजिएगा, बहुत सारी हम लोग चीजें कर रहे हैं. कम से कम 30 से ज्यादा इंस्टीट्यूट के साथ. मार्केट इतना वो नहीं हूँ मैं, फर्स्ट बार मैंने आपका नाम सुना, लेकिन मुझे प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा लगा और आंसर भी बहुत अच्छा लगा था मुझे. थैंक यू विशाल. पूछ रहा हूँ. Thank you, Vishal. Thanks for your kind words. But lot of things are possible, and it's people like you who will make the difference. Yeah. Next.
Namaste. Hello. Hello, yeah. Yeah, sir, I'm like recently graduated. Like I have some ideas for to do a startup. So I am थोड़ा not आप able जोर to विनायक, आई एम do नॉट एबल टू हियर यू, कीप द माउथ माइक नियर योर I'm माउथ. I'm not able to मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा आइडिया चूज करूँ स्टार्टअप के लिए और कौन सा प्लेटफॉर्म देखना है वो सर कुछ नहीं पता है तो बस आइडियाज ज्यादा है लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है कौन सा आइडेंटिफाई करना है राइट प्रॉब्लम को चूज करना मुश्किल हो रहा है अब यार उसके लिए हम आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते विनायक. व्हाई आई एम सेइंग दैट, you are going home, what you want to eat, whether you want to eat idli vada, you want to eat rice chapati, you want to eat dal, you want to do fast, you want to eat maggi, is your call. But what happens is take action, choose something and eat. So बहुत सारा आइडिया जो होता है वो कोई कुछ नहीं करता है. So take one idea. if you believe if you believe that you will pay for that idea, you take that forward and move on. That is what will create that, create something big, what you can be proud of. Okay. ओके सर ओके ओके Any गुड other इवनिंग सर। questions? Yeah. सर जैसे हमें पता है सिल्क प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं ना, सिल्क इज कॉस्टलियर। सो आपका जो प्रोडक्ट है वो सिल्क से बना रहे हैं ना, सिल्क प्रोटीन से बना रहे हैं, तो बिल्कुल आपके जो प्रोडक्ट है वो पुअर पीपल अफोर्ड कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं. जरूरी तो नहीं है ना कि हर अच्छी चीज महंगी हो आगे लक्ष्मी. हर अच्छी हाँ चीज महंगी होने की जरूरत नहीं होती. और मैंने बताया ना कि मैं सिल्क ले रहा हूं तो उसमें इनोवेशन है, पेटेंट है, यूनिकनेस है. इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आपको हर चीज महंगी होनी चाहिए. So that's why these products are quite affordable. We have product range starting from 50 rupees to 4,000 rupees, depending on type of wound, depending on the condition, depending on the case of the wound. तो ये सारे solutions हमारे पास अवेलेबल है. थैंक यू सर। Thank you, Bhagya. Anyone else? Any other question from anyone? No questions at all? Saurav Jagade has asked, what is the role of biotech in sustainable agriculture? सौरभ, बायोटेक प्लेज ए बिग रोल. बायोटेक के अंदर वही होता है जहां पे आप कुछ एक इम्पैक्ट करते हो which has potential to multiply things up, which solves the problem. और बायोटेक हैज ए ह्यूज रेंज टू प्ले इन सस्टेनेबल. सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल इज ए वेरी फैंसी वर्ड. देयर आर टू वर्ड्स, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, where everyone uses कि I am eating in an innovation way and I am taking a bath in a sustainable way. But please understand, sustainable is something जो कि एक circular way में आप कर सकते हो without hampering. अगर आप see the word and the whole of universe is made in such way that to get X you have to sacrifice Y. एग्जाम्पल, अगर आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल तो करते हो. ऑक्सीजन आपने एटमॉस्फेयर से दिया, प्लांट ने आपको, ट्री ने ऑक्सीजन दिया, तो आप ट्री को वापस में क्या देते हो? कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स हाउ इट्स ए बार्टर सिस्टम व्हिच यूनिवर्स कॉस्मोस हैज सेट फॉर एवरीवन. इसीलिए वहां पे जब आप देखते हो तो बायोटेक हैज ए ह्यूज रोल टू प्ले, वेदर इट डिपेंड्स ऑन यू आर लुकिंग एट सीड्स, यू आर लुकिंग एट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसमें आप लैंड और सॉइल की जो कई सारी चीजें उसे खराब नहीं करते हो, या यू आर लुकिंग एट ए क्रॉप रोटेशन काइंड ऑफ थिंग जिसमें प्रोडक्टिविटी यील्ड बढ़े विदाउट इंपैक्टिंग द सॉइल एंड विदाउट वेस्टिंग द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. ऐसा नहीं कि आपने यूरिया ठोक के और इतना ज्यादा कर दिया कि आगे चल के 20 साल के बाद वो सॉइल खराब हो गया. नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग. सो यू लुक एट ए सोल्यूशन एंड बायोटेक हैज ए ह्यूज रोल टू प्ले इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. And I'm sure you yourself can. This is a very vast topic and इसके ऊपर आंसर देना in 1 minute or 2 minutes is a very difficult task. So if you want something, I'm sure there is a lot of enough information on web about it, so you can approach, look at that, and you can address it. Okay, Saurabh? Sir, I think this is the end of the session. I think we have no more questions. So
On the behalf of our team and our participants, I must congratulate you and thank you for being, so interactive with the participants, being so, such a wonderful session we had. So we are very grateful and thank you, sir. So thank you so much for joining. Thank you very much. Thank you, everyone. You can connect to me and all the best. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. So, dear participants, I, Preeti Vats, now will be hosting you for the next session, for which I would like to invite Mr. Shubodh Kumar Gupta, sir. Sir, are you there in the meeting? Yes, Preeti, I'm there. Yes, sir. So, before inviting sir to deliver his talk, now I would like to introduce sir to our participants. So, sir is a chief manager of marketing at Dhanuka Agritech Limited. So, Bodh Kumar Gupta sir has obtained his bachelor degree in applied life sciences from University of Delhi, and after that he went for MBA from Amity University, Noida. So both sir has pursued executive education program in agriculture input marketing, agricultural business management, and from Indian Institute of Management, Ahmedabad. So both sir has extensively worked in agriculture sector from almost 12 years, spanning over sales, marketing, and product management. Especially, he started his career with the seeds industry as management trainee in the Monsanto. Later as territory sales manager for almost 7 years. In Monsanto too, he won so many awards like Safety Champion Awards of Excellence, Vegetable Research Excellence Award, People Choice Asia, New Product Champion Award, and Actively Caring Award. And then he joined Dhanuka Agritech Limited, where he took the profile of product manager, later promoted as senior marketing manager, and then crop manager, and now his current position is chief manager marketing. He's based in Gurugram, Haryana, where his responsibilities, I already mentioned, is like manager of marketing. Every year in Dhanuka, since he joined, is awarded with Marketing Excellence Award and Best Marketing Initiatives to drive business from 2017 to 2020. He's the only person in marketing who has honored with prestigious Group Chairman Award in 2020 and 2021. He has recently been awarded with prestigious Leader with Strategic Vision by Agribusiness Summit and Awards of 2022 at Hotel Park, Hyderabad, India. So, sir, we are more than happy to have you here today. Now, I would like to invite you to the podium and address our participants with your talk. So, over to you, sir. Thank you so much, Preeti, for detailed introduction. That was never happened ever. So thank you so much. And in this presentation also, which I have prepared for this set of young enthusiast people, that I wanted to share you with something which is very, very practical. I'll be talking some of the concepts, but mostly I'll be sharing you the practical side of this industry, right? So I'll be quickly sharing my screen. Okay. Okay. I have to show some video testimonial also. So I'm changing the setting to shared sound also. Okay. So I hope my slides are visible now. Yes, sir, it's visible, sir. Okay. So before I start, I thank Preeti for such a hosting she has done, and the entire team of Just Agriculture and Krishi Manthan. So every time this team is dedicatedly supporting the young enthusiasts who are like looking for working in agriculture field and the other dimensions of agriculture also. For everybody's information, last time I talked about agriculture 4.0, where I talked about precision farming, where I talked about drones. And I also talked about challenges of agri sector, where I talked about the registration process, which is very slow in our country. So before I start my today's presentation, I request everyone to switch on your cameras, please, so that it will be an interactive presentation, and I will be feeling like I'm with you, right? So I'm starting my presentation now. So before I quickly jump into the context of the presentation, I would want that people here should know
the campaign which has been awarded by Economic Times recently. It's a 1-year old campaign, and in this campaign we saluted the farmers. We saluted the farmers for the hard work they have done for our country, right? So during the COVID times also, जब सब कुछ रुक गया था और हमारे एग्रीकल्चर जो हमारा एग्रीकल्चर है वही बस नहीं रुका था, within 5 days or 7 days जो है post COVID things started moving for agri inputs, and ये important sector हमारा है, तो ये भी इमरजेंसी के लिए हमारे फार्मर्स के लिए, जो भी हमारे फार्मर्स को एग्री इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं और उनके पास जाने चाहिए थे, उसके लिए फिर we initiated one campaign, and this campaign is having one video which I want everyone to listen. पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। So this campaign is totally about thanking farmers, saluting farmers for their contribution in nation building. So ये campaign को अभी recently ET awards में agriculture sector में जो है award दिया गया for reaching maximum farmers and saluting them for what they are doing for us. They are ensuring that हमारी थाली में खाना जो है वो बराबर हमें मिलता रहे। हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर हमारे फार्मर्स ही कर रहे हैं। सो लाइक what will be, like, what are the expectations from this presentation? Any of the candidate who would like to share कि इस presentation से आपको क्या चाहिए और इस session से आपको क्या चाहिए? Anybody can unmute and anybody can just say that this is what I am expecting from Subodh. I want this to be interactive, so I just want your participation also. Or any team member from just agriculture can say that. What are the expectations from this presentation? I am audible. My internet is working fine. Yes, sir. Yes, sir. It's audible, sir. So out of 255 people, including me, nobody is ready to share any expectation, or you don't want to set expectations because expectations hurts, right? Aisa? Chalo, I'll not waste time. I'll quickly come to the subject, and I'll try to see if I'll be able to put all the expectations of yours in this presentation or not later on. So the most important thing is drivers of agri-business transformation. So agri-business or agriculture, since agriculture 2.0, 3.0, हम बैलगाड़ी से ट्रैक्टर पे आए, ट्रैक्टर से हम अब धीरे धीरे ड्रोन्स पे आ रहे हैं, and AI जो है that is playing a major role also in agriculture, like going to play a major role, and precision farming is also another thing which is important. So what are the drivers of agribusiness? See, population is increasing. We have very less land, and in less land we have to have more yield with less resources, right? At the same time, the thing is happening is like commercialization is also there, and urbanization producing for the market, commercialization, farmer forces on increasing incomes. So this migration is also happening. And the most important which I will be taking away from this is the growth in rural income is very, very important, which is happening. At the same time, infrastructure is also developing. And another thing is communication, information technology, ICT
revolution. Like every farmer is having a phone. Now my farmer is calling me in the morning and saying that कि सर आप कब आ रहे हैं, grapes जो है वो ready हो रहा है. Thing is changing. Like if they are having any doubt also, they are giving a video call and saying, sir, this is the condition now, when I should spray. So these are the drivers of agribusiness transformation, which are very, very important. We are having changing food consumption pattern, demand for quality. People are looking for quality now. Even the farmers are looking for quality inputs for producing the produce, right? When I was studying, मैं पढ़ता था कि ईस्टर्न यूपी अगर बात करें, पूर्वांचल की अगर हम बात करें, तो वहां पे किसान जो हैं वो उतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है. डेवलप्ड एज इन दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड. बट द थिंग इज यू कैन सी एग्जांपल्स. ऐसी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें बिल्कुल स्प्रे नहीं होता था, बट जो फार्मर्स को प्रोडक्शन चाहिए, जो फार्मर्स को कंट्रोल चाहिए डिसीज के लिए, उसके लिए दे हैव स्टार्टेड, दे आर नोइंग नाउ कि स्प्रे ऑफ chemicals, use of biologicals, and improving the health of soil is very, very important. Nithya, if you can mute. Nithya, Sudarshan, if you can mute, or host if they can mute Nithya. Okay. So I was talking about the drivers of agribusiness. Now see, traditional experience agriculture transformation to I request host to mute Nithya, please. Nithya, all in capital. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please. So traditional experience agriculture transformation to science-based modern agriculture. Now talking about, हम kgs में दवाइयां यूज करते थे, 1 किलो पर एकड़ का जो है घोल बना करके स्प्रे. नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. अब हम बात करते हैं 36 ग्राम, अब हम बात करते हैं 16 ग्राम, हम बात करते हैं 100 ग्राम. So this is the science-based modern agriculture. We are talking about सॉइल को, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें 60 किलो या 100 किलो खाद देने की जरूरत नहीं है. हम माइक्रोराइजा इस्तेमाल करते हैं. दैट इज नित्या, कैन यू प्लीज म्यूट नित्या? If host can mute so that everybody. Requesting host to please mute Nithya, or you can make me the host so that I can control those people who are unmuting. Will definitely disturb. Oh, I'm the co-host. I can mute. So sorry. And see, the transformation on the basis of the use of technological shift which is happening in agriculture is also visible now. Earlier we were using 150 liters and 200 liters of water for spraying 1 acre of land, and this is also we are using currently. At the same time, drone can spray 1 acre land in less than 20 minutes with very less quantity of water. 10 to 20 liter of water a drone can spray. So this technological shift is happening in the form of devices also. There is a device which is placed in your field, and that device is telling about the leaf wetness, soil moisture, and the microclimate of that particular geography, that particular place. So that technological shift is helping farmers to save water also, as well as to spray the right required pesticide or the solution to be provided when there is a emergence of any pest, right? So this is another thing which I'll be sharing you some of the examples also. And now farmer is not just expecting only a solution to a problem.
he is expecting a young individual like you, like me, to help him in providing the solutions for the entire crop, starting from the soil. I was talking about the soil health earlier. Earlier people used to have like 60 kg, 100 kg. Now there are mycorrhizas which are used in 2 kg, 4 kg, 8 kg, like that quantity. And there are mycorrhizas earlier which were having ectomycorrhiza in that. Now they are having endomycorrhiza in that. Endomycorrhiza वो होता है जो जिसमें कृत्रिम जड़ें, जो रूट्स हैं, extended roots comes out and it helps to get the entire nutrition which is available in soil, but वो वैसे का वैसा पड़ा रहता है, उसको nobody can pick that nutrient और uptake उसको plant में नहीं मिल पाता है. But with endomycorrhiza, the roots which get extended helps that non-movable nutrient to get the uptake in the plant to provide the better health. So if I talk about the some of the stats about agri input industry in agrochemical, if I say like 22, 23, we are working in the calculation of 23, 24 also. So it is between 35,000 crore to 40,000 crore, which includes approx 2,200 crores of biologicals. See, the biological world is the new world which is growing. You can see most of the companies, they are having their separate websites and their divisions of biologicals now in India specifically, because mostly you will see the initiatives by the government when government is talking about taking the agriculture organic way, right? So we have to take everything balanced hand in hand. Only going with organic will not solve the purpose. We have seen the example of Sri Lanka. When there is a need of medicine, you have to take medicine. There is no other way of getting rid of that. अगर मेरे को कोविड हुआ तो मुझे रेमडेसिविर लेना पड़ा, और वो मेरे को कब लेना पड़ा? एकदम लास्ट में, जब मेरे को कंट्रोल नहीं मिल रहा था. तो काढ़ा हो गया या जो भी सॉल्यूशन आयुर्वेदिक हो गए, उसने एक लेवल तक मेरे को सपोर्ट किया. बट एट द टाइम व्हेन आई नीडेड रेमडेसिविर एंड स्टेरॉइड्स, मेरे को हॉस्पिटल में वो लेना पड़ा टू सेव माय लाइफ. तो इट्स लाइक सेम विद plants also. When plants are in that condition that they cannot survive with the biologicals or any other organic thing which help plant to protect himself, so that time you need to give the right medicine, right? Similarly, and see, insecticide is approx 15,000 crore, fungicide is 6,500 crore, PGR with biostimulants is having 3,500 crore. So PGR and biologicals, including where biologicals, biostimulants, everything will come, it is more than 5,000 crore, between 5,000 to 5,500 crore. Herbicides, 8,500 crore. So majorly which key crops which are contributing, rice is having the maximum consumption because we have huge acreages of rice, paddy, cotton is there, vegetable, fruits, and 30%. Horticulture, we are doing excellent across India, even at the world platform also. Pulses 8%. So this is the contribution and the bifurcation. So I wanted to take you to the biological landscape also, because biologicals, every company is having a biological position now. You will see there is a position for biological manager, biological marketing manager, biological head, and territory level also biological positions have started coming. The reason is the CAGR growth, if you will see for biologicals, the current biological landscape is 15% is the CAGR. It is going to rise. The reason is people want to have organic way also. At the same time, we have to improve the health of our soil, our mother soil. We have to take care of that. So with that, biologicals play very, very crucial role. So this is the landscape of
biological, like I said, it's between 5,000 to 5,500 crore. This is the approx biological landscape overall size, where biological control, nutrition, and biostimulation, all segments will come. So this is just the bifurcation, right? So if we see the marginal, the small, semi-medium, medium, and large, this is the categorization operational holdings which are classified in 5 size classes, right? So I'll come to a concept now. So this concept is understanding agriculture input marketing from the understanding of agriculture input marketing, where there is one sales target approach and marketing approach. So आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं इंडस्ट्री में जाएंगे, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी हो, और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोफेसर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, जो इस इंडस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं या इस इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वन वे और द अदर, राइट? सो here two approaches I'll be talking about. See, I'm not from a agri background. मेरा जो graduation है that is from University of Delhi और ये 3 साल का है. I'm not a 4-year hardcore agri pass out guy. So point is, अगर कोई यहाँ पे ऐसा है जिसने BSc एग्रीकल्चर नहीं किया है और वो एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहता है, तो I am the right example for you. मैंने भी 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, 2 साल का MBA किया है. तो ये इम्पोर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने BSc 4 साल का एग्रीकल्चर का नहीं किया तो आप इस इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. तो ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता था. दिस इज वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू मेक हियर. नाउ सेल्स टारगेट अप्रोच, मार्केटिंग अप्रोच. मैंने सेल्स भी किया. 7 years मैंने मोन्सेंटो में मैंने अलग अलग टेरिटरीज में एस्टैब्लिश किया, सेल्स किया. एंड उस सेल्स में क्या होता था कि एक नंबर होता था कि मैंने इस साल सपोज 2011 मैंने 2 करोड़ मैंने अचीव किया, और मैं अगर मीटिंग में जाता हूं 2012 की प्लानिंग करने के लिए, तो मैं बोलता हूं, मुझे बोला जाता है कि आपने 2 करोड़ किया, नेक्स्ट ईयर आप इसका 40% का ग्रोथ अचीवमेंट का ऑब्जेक्टिव रखो. तो फिर ये क्या होगा? ये कैसी अप्रोच होगी? ये एक टारगेट अप्रोच होगी कि अगर आपने 2 करोड़ किया है तो आप 3 करोड़ करो, आप 4 करोड़ करो, आप डबल कर दो. So I'll quickly read this. It is the intention of the company to achieve a particular quantifiable sales goal. See, मैंने बोला ना 2 करोड़ से 3 करोड़ या 4 करोड़, तो ये quantifiable sales goal है. And it is a final figure that is arrived at as a result of conscious planning activity. ठीक है कि इस साल आपने इतना किया, इस साल आपने ये किया, तो अगले साल के लिए आपको ये करना है. यूज ओल्ड डेटा हिस्ट्री. जो मैंने अचीव कर लिया उसको देखते हुए, मैं ट्रेंड को देखते हुए, सेल्स परफॉर्मेंस को देखते हुए, मैं अपने डिफरेंट ईयर्स के बोल रहा हूँ कि मेरे को 2 से 3 करना है, 2 से 4 करना है, या डबल करना है, और डिपेंड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस विच एक्टेड एज इनहिबिटिंग फैक्टर. ठीक है, ये भी मैं बात कर चुका हूँ. नाउ सेल्स टारगेट अप्रोच या सेल्स टारगेट मेथड फेल टू कैप्चर द मार्केट पोटेंशियल. ठीक है, एंड फोकस ऑन द पास्ट, जो पुराना आप कर चुके हो, एंड द इंटरनल कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, तो मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए थे सेल्स में, मैं आपको बताता हूं. जब मेरे को टेरिटरी दी गई, आई विल गिव यू द लाइव एग्जांपल. मेरे को जब टेरिटरी दी गई, बनारस टेरिटरी दी गई, तो दैट टेरिटरी वाज अप्रॉक्स 1 करोड़ 50 लाख. ठीक है, तो ये मैंने देखा कि सब टेरिटरी से बनारस टेरिटरी में अप्रॉक्स हमारा 2 करोड़ 3 करोड़ का तो मटेरियल ऑलरेडी अलग अलग टेरिटरी से आ रहा है. तो हमारी अपनी टेरिटरी जो है वो सिक्योर है ही नहीं, और वहां पे हमारा कोई भी फोकस अप्रोच नहीं है ताकि हम उसको सेव कर सकें, वहां के नंबर्स को हम, मार्केट को हम कवर कर सकें. तो इशू कहां पे आएगा फिर कि हमने जो 1.5 करोड़ हमने अचीव किया, मेरे लिए ये चैलेंज था कि मेरे को अपनी टेरिटरी को सिक्योर करना है ताकि बाहर से कोई भी मटेरियल नहीं आए. ठीक है, तो वो टेरिटरी सारी चीजें कंट्रोल करने के बाद, सारी चीजें मार्केटिंग अप्रोच उसमें डालने के बाद में, वो टेरिटरी जब मैं 2014 में मैं वहां से मूव हुआ, तो वो टेरिटरी 7 करोड़ की थी, ओवरऑल 7 करोड़ की थी. अब वहां पे क्या ऐसा हुआ
So see, marketing approach plan to exploit the potential in the market. So पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लॉइट किया, हमने ये देखा कि मेजर क्रॉप कौन सी है, तो टोमेटो है, चिली है, कोल क्रॉप्स है, कैबेज और कॉलीफ्लावर है। तो उनका मार्केट पोटेंशियल क्या है, कौन कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे वो क्रॉप्स लगती हैं, कौन कौन से ऐसे मार्केट्स हैं जहां पे फार्मर्स परचेज करते हैं प्रीमियम मॉलिक्यूल्स स्प्रे करने के लिए, राइट। सिमिलरली, generally the reliable agriculture data regarding area under different crop is not readily available for all district. ये challenge आता है, ठीक है। The extent of use of pesticide on different crops and stages of crop was not readily known in marketing approach. So see, अगर हम marketing approach लगाते हैं instead of sales target approach, तो हम क्या करते हैं, हम entire thing study करते हैं कि क्या वो potential है उस market का जहां पे हम crop को पकड़ें, market को पकड़ें, farmer को पकड़ें, even ट्रेड को पकड़े कि उस मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड कौन सा है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उससे हम फिर कन्वर्ट करें। सो दिस मिक्स ऑफ मार्केटिंग अप्रोच इन सेल्स ना विल हेल्प यू टू मेक यू कॉन्फिडेंट फर्स्ट, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सिर्फ नंबर देख करके हम अगर बात करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इससे क्या निकल करके आता है कि हमें अपनी मार्केट को बहुत अच्छे से समझना है, हमें अपनी मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि कौन सी क्रॉप्स हैं, कैसे है, और उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, कैसे मूवमेंट है, विद राइट सिलेक्शन ऑफ ट्रेड आल्सो, एट द सेम टाइम राइट सिलेक्शन ऑफ फार्मर्स आल्सो। तो ये इंफॉर्मेशन हमें वहां से फिर मिल सकती है। सो दीज आर दी टू बेसिक अप्रोच ऑफ agri input marketing environment, where we are talking about sales target approach and marketing approach. So another thing is supply chain coordination. So this is happening in our real time and in real life in most of the companies, where हम ये बोलते हैं, we say that this product is required in this much quantity in the month of December, right? तो आपने एक इंटेंट दे दिया कि आपने जो है इंडेंट दे दिया कि आपको ये 5 KL चाहिए, ठीक है, लेकिन डिमांड आ गई 15 KL की, राइट। आपने दिया 5 KL और डिमांड आ गई 15 KL की, तो वहां पे सप्लाई चेन विल क्रैश, क्योंकि उसको आपको सप्लाई करने के लिए जो आपने कम्युनिकेट किया है उसको इंफॉर्मेशन नहीं है। सो ये चेंज जो है ना, इसको हम आगे बताते हैं कि ये होता क्या है, कहते क्या है इसे। सो सी, डिमांड पैटर्न समझना फॉर इंडिविजुअल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर वी सी की सेल्स इज लेस बिकॉज ऑफ सोइंग अगर कम हो गई है, या प्रोड्यूस का प्राइस जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं है जिसकी वजह से फार्मर स्प्रे नहीं कर रहा है या यूज नहीं कर रहा है। इन्वेंट्री कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच देयर, जो आपका ट्रेड लेकर के रखेगा, स्पेस रखेगा, इक्विपमेंट्स यूज होंगी, जो भी आपका सप्लाईज होते हैं उसमें मैन पावर यूज होंगी, और नियर एक्सपायरी इज अनदर कंसर्न अगर हम सप्लाई चेन में बात करें, अगर डिमांड पैटर्न की बात देखें। तो इसके कॉज क्या होते हैं, कॉज फ्लक्चुएशन के कॉजेस क्या होते हैं, तो ये है कि ट्रेड प्रमोशन, मार्केट शेयर और मार्केट साइज अगर हम देखें, फिर उसके बाद में फॉरवर्ड बाइंग, इंड्यूसिंग फॉरवर्ड बाइंग इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, कि मैंने पहले ही बोल दिया कि ये इस बार तो मिलेगा ही नहीं आपको, इस बार तो 100% शॉर्टेज है, पहले ही मंगा के रख लो। तो I'm saying a trade partner that you will not get this material, this is very much in shortage, I'm inducing forward buying in the mind of customer, and they are buying it. Like most of the time it happens. There are times when shortages are there, but most of the time it happens like when a brand is there, तो mostly everybody says कि sir आप जल्दी से ले लीजिए, मैं तो मिलेगा नहीं। And month end pressure for sales team, placements का month end syndrome रहता है, forecasting जो है वो tricky हो जाती है, और sometimes SKU shortages जो है वो बड़ा किल करता है गेम को, जब हम बोलते हैं कि सर ये SKU तो मिलेगा ही नहीं और आप दूसरा SKU मंगा लो। तो these are the causes of fluctuations mostly. So प्रैक्टिकली अगर हम देखें, इंस्टेड ऑफ मंथ एंड सिंड्रोम, सेल्स शुड बी डेली एंड वीकली सिंड्रोम, मतलब डेली होना चाहिए सेल्स, क्योंकि अगर आप मंथ एंड में जाकर के, लाइक इफ यू आर फ्रॉम एनी सेक्टर जहां पे आपका मंथ में एक प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस को अकम्प्लिश करने के लिए
आपके जो एफर्ट्स हैं वो डेली लगने चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी कि मंथ एंड में जा करके करेंगे. इट शुड बी लाइक फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ यू आर achieving your promise of entire month. This should be the play which should be played by everybody, each one of us, right? So this is another thing which I wanted to share. So bullwhip effect chat, I have one question. Okay, what's SKU? Okay, SKU is, I'll tell you, स्टॉक कीपिंग यूनिट. उसको और अगर हम देशी भाषा में समझाएं तो सपोज दिस इज ऑयल ऑफ 50 ml and this is another oil of 100 ml. So these two are SKUs, right? Okay. So the magnification of variability in orders in supply chain. So see, ये इफेक्ट के बारे में समझना जरूरी है. फील्ड लेवल पे मेरे टीम मेंबर्स हैं, डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं. सो टीम 1 जो है वो ऑन ग्राउंड टीम है. टीम 1 ने क्या बोला कि सर हमें रिक्वायरमेंट है 2000 MT की. फिर टीम 2 के पास में जो है जानकारी टीम 1 की जो 2 MT की है वो पहुंचती है कि ये तो बेचेंगे ही नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं. मैं सेफ साइड चलता हूं, मैं बोलता हूँ 15 जो है हम MT लेकर के चलते हैं. 20 MT की जगह हम 15 MT लेकर के चलते हैं. अब 15 MT से ऊपर बॉस पे आया, उसने बोला यार ये हर बार ऐसे बोलता है, करता तो है नहीं, तो वो 12 MT पे आया. और उसके बाद में फिर उसके ऊपर वाले ने उसको 10 MT पे बोला, तो ये फोरकास्ट जो है ये कोलैप्स हो गया, राइट? एंड वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आपने बोला 20, बॉस ने बोला कि 25, फिर उसके बॉस ने बोला 30 MT, कि ये बोलते हैं लेकिन हर बार इनको ज्यादा चाहिए होता है. तो ये भी वाइसा वर्सा जो है. सो दिस product numbers, you can see the graph is the bullwhip effect that is showing the magnification of variability in the orders. So इसको हमें stop करना चाहिए. At any level there should be one number for any company, for any organization. एक नंबर को हमें ड्राइव करना चाहिए. इंस्टेड रीजनल मैनेजर ने अलग नंबर दिया है, टेरिटरी मैनेजर ने अलग नंबर दिया है, जोनल मैनेजर ने अलग नंबर दिया है, और ये सोचा कि ज्यादा नंबर दे देते हैं ताकि अचीवमेंट हो जाएगा. दैट डजंट वर्क. दैट रियली डजंट वर्क. देयर शुड बी वन नंबर, वन प्रॉमिस वी शुड चेज टुगेदर, so that this bullwhip effect and the demand supply chain gap should not come. This is really very, very important. Okay. So इम्पैक्ट ऑफ बुलविप इफेक्ट, एक्सेस इन्वेंट्री हो जाएगा, अननेसेसरी कॉस्ट होगा, इनसफिशिएंट एक्सेस कैपेसिटीज. आई एम नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, बट सी वी नीड टू अरेस्ट दिस बुलविप इफेक्ट टू मूव थिंग्स फॉर एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन very, very smoothly. So the most important thing is communication, which should be one communication across the organization at all levels. So this will improve the forecast data also, right? Okay. So post this supply chain thing and the sales target and marketing approach, I'll come to the promotional strategies like most of the agri input companies are doing, right? So see, now in these times of digital era, most of the companies are spending huge budgets on digital marketing. Like we are also doing that. Dhanuka is also spending huge on digital marketing. And what we do in that, we have WhatsApp circulation to the set of farmers for their specific
Hello, sir. Are we connected, sir? Hello. I'm so sorry, light got disconnected and now I'm audible. Yes, sir. You're audible, sir. Okay. So I was talking about the promotional strategies which companies are following now, and we are spending on digital thing. We are doing WhatsApp. TikTok is old one. You can just ignore it. And YouTube, Facebook, and Instagram, right? So the most important tool and the old tool is word of mouth. जो फार्मर ने बोला और वो स्प्रेड हुआ, वो कैसे स्प्रेड होता है नाउ डिजिटल वर्ल्ड में, आई शो यू दैट आल्सो. Print media, we are circulating many advertisements as well as success stories in newspapers, agri magazines. Our direct marketing team is there. POP, point of purchase pay, we are putting testimonial literatures, posters, demo boards, basic thing. Positioning statement to have the strong impact on your brand. The new thing which is happening is collaboration with scientific communities. We have strategic outcomes, like, and any organization, not every organization, but Dhanuka is having strategic outcomes which are there to support the scientific community also. And there we are doing the activities and actions around the scientific community. I'll tell you how we are doing that. Creating center of excellence where all farmers can see the results of all vegetables at one place, right? So this is one thing. And promotional strategies ho gaya. Okay, so this is like 1 month plan of any crop or any demonstration for any season if we are planning. Like S is for sowing, H is for harvesting, T is for transplanting. And this is the way we as a marketer, we should prepare a calendar. And before the seed sowing, everything should be planned, from literature to the communication tool, entire tool by the marketing for your entire team, right? And what farmer is expecting, or what farmer activities should be like, like they are expecting, like, so what we can do, we are calling the farmers regularly, we have a relationship with them, provide excellent. So I am the co-host, so I have muted Kailash ji. So provide excellent follow-up services. We have to act as a consultant. हमें एक consultant की तरह act करना होगा. Bring innovative ideas. Farmers के लिए लाने पड़ेंगे कि क्या करने से क्या production में हो सकता है. Provide relevant and timely information. See, अगर if farmer is calling you and asking you something that is very very urgent, तो वो immediately ASAP होना चाहिए. Bring the best price with excellent service. Price is always important for farmers. Like my previous speaker also said कि हर अच्छी चीज जो है वो सस्ती नहीं होती, या हर सस्ती चीज जो है वो अच्छी नहीं होती, उन्होंने बोला. तो that is also very very important thing. So brings the best price with excellent service. He who helped me feel sure, confident about my crop package of practice at regular phase in crop cycle. So ये स्लाइड ये कहती है कि हमारा फार्मर चाहता क्या है हमारे से. इफ यू विल गो इन एग्री इनपुट सेक्टर और एनी सेक्टर जिसमें आप फार्मर को या कस्टमर को आप एज अ फेस यू आर फेसिंग, so these are the things expected from any customer or farmer. And the most important thing is, it's not about कि आप उसको एग्रीकल्चर सॉल्यूशन ही दे रहे हो. अगर उसका बेटा पढ़ाई के लिए कुछ आगे सोच रहा है, तो उसमें भी also you can add value कि ये एग्जाम कहाँ से देना है. So that will give you a big connect also, right? ये एक कनेक्शन जो है वो जरूर देगा. So चैलेंजेस क्या है एग्री केमिकल इंडस्ट्री में, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर में. हमारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, दीज आर वेरी 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 कम्बरसम. हमारे स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स जो ब्रांड बनता है, उसके इमीडिएटली स्प्यूरियस प्रोडक्ट मार्केट्स में आ जाते हैं. फॉर्मुलेशन का प्रोसेस डेवलपमेंट, हमारा
अपना R&D जो है, इंडिया की R&D की बात करें, दैट इज नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग. हम बहुत कम स्पेंड करते हैं एज अ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर. इफ आई टॉक अबाउट बेसिक R&D, हम हमारी इंडियन सेक्टर में नहीं है. एंड नेगेटिव पब्लिसिटी, पॉइजन है आपकी थाली में जहर है, लाइक दैट, ऐसा नहीं है. सी, वो तब होता है जब फार्मर जो है इनडिस्क्रिमिनेट यूज करता है किसी भी दवाई का. अगर मुझे बुखार है, मैंने अगर एक डोज के जगह मैं 4 डोज इकट्ठी ले लूंगा, तो उससे मेरी सेहत क्या, मैं ही सीधे ऊपर चला जाऊंगा. सेम गोज विद प्लांट. तो ये हमारा काम है कि हमें फार्मर्स को अवेयर करना है कि क्या यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, कैसे यूज करना है. सो देर आर सो मेनी नेगेटिव sentiments or publicity which are happening, which should be stopped. So public unaware about new chemistry जो less toxic है. There are triangles on every bottles of agrochemical जो हम लेते हैं, तो उसमें रेड जो ट्राइंगल है उसको तो बैन कर दिया है ऑलमोस्ट, और उसको यूज ही नहीं करना चाहिए. ग्रीन ट्राइंगल केमिस्ट्री जो है, ग्रीन ट्राइंगल इज वेरी सेफ, ब्लू ट्राइंगल इज ऑल्सो देयर विच इज सेफ, एंड येलो ट्राइंगल इज ऑल्सो देयर, like that. So like I said, collaboration with universities and industry or public government sector को एक साथ आके be the one voice, right? These are some important points जो मैंने as a इकट्ठे मैंने किए हैं, तो you can just take a screenshot. I'll not going to read each and every point because I want to spend time on interaction also. Okay. So message to everyone is always be proactive then reactive. Ensure cross-functional harmony and shared responsibilities, finance और non-finance. कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है. अगर कोई कंप्लेंट आती है तो दिस इज नॉट माय डिपार्टमेंट. मैं R&D को कंप्लेंट के लिए भेज देता हूँ या मैं किसी और को भेज देता हूँ. In this sector, see, it's very very critical sector and we have to have farmer happy at all the times. तभी वो अगर खुश रहेगा तो भी हम खुश जो है वो रह पाएंगे, और उसकी प्रोडक्शन इंश्योर करेगी कि हार्मनी है या नहीं है. एंड वी नीड टू आउटथिंक कॉम्पिटिटर्स, लेट अदर फॉलोज. सो अगर आपकी अप्रोच में मार्केटिंग अप्रोच आ जाएगी, इफ यू आर इन सेल्स एंड इफ यू आर इन मार्केटिंग, आपकी मार्केटिंग में सेल्स अप्रोच आ जाएगी, तो दैट विल बी गेम चेंजर. इफिशिएंट बजटिंग, क्वार्टरली रिव्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. हमें अपने आप को, जैसे हम डेली तैयार होते हैं, डेली खाना खाते हैं, हमें अपने काम को देखना है उसी तरीके से. वी हैव टू बी लाइक fully motivated teams with passion. Business environment dynamic changes are inevitable. So we need to be like up to date. Motivate करना टीम को is very very important. See, आपको ऐसा मैनेजर बनना है जो टीम को मोटिवेट कर सके, टीम को आगे ले जा सके. नॉट लाइक कि अब वो टाइम गया कि आप किसी को भी बोल के कुछ भी आप करवा सकते हैं और यू कैन डिमांड एनीथिंग. So you have to be a motivated team manager with passion. Without passion, this industry, in this industry, you won't be able to survive. और उसके लिए कैसे, मैं आपको वो भी examples I'll show you. See how Dhanuka is transforming Indian agriculture. These are some of the products with technical names given and the focus crop where they mention target disease and the target pathogens. These are new 9(3) molecules which are exclusive with Dhanuka. So Kirari is one product which is having excellent result on Phytophthora infestans. So mostly people from scientific community also will be here, and you will see like in potato crop which is currently there in Gujarat, Himmatnagar, and in UP, Agra, Shamshabad, Firozabad, in UP, Kannauj, right, and Punjab. Most of the potato growing belts currently are facing late blight problem, and there is no curative solution for late blight where the disease gets controlled post late blight occurs. Then there is no control of that, and within like 72 hours the entire crop is damaged, right? So I'll show you one video testimonial also, how we create the video testimonial of farmer success story, say, or testimonial, and we circulate that testimonial to everybody.
with registered farmers. We have potato registered farmers across India. So we circulate that to them, as well as team also circulate the same testimonial with their set of people. And how we do the branding on that, that also I will show you. So see, this is the opportunity which I took when I saw the grapes first time, when I met a lady who was cultivating chili crop in South Guntur. I saw the heap of red chilies uh, together, and in Sonbhadra, Eastern UP, tomato, and colored vegetables, capsicum, which in near Bangalore, and which are taller than the height of the plant is like almost like reaching the heights. So this opportunity, this industry gives you. This industry will, if you are a travel person, like you want to travel, so this industry is for you, and you want to explore yourself and the case studies of each and every single farmer. Every time you will travel, you will see how a farmer life is, and every day you will see a different story. डेली निकलते हैं एक नई केस स्टडी टाइप, हमें लगता है कि ये एक फार्मर का लाइफ का केस स्टडी है, जो हम देखते हैं कि हाउ ही इज स्ट्रगलिंग एंड हाउ ही इज अचीविंग and how he is making the difference in agriculture sector, right? So this is how Dhanuka is also transforming the Indian horticulture sector, supporting the farmers with right doses, right products at the right time to save their crop and to have the crop which can be exported, right? So these are the Kisan Chopals we organize in collaboration with KVK's scientific community. So earlier people never connect with the scientific community that इनसे हमारा क्या काम होगा. But if we connect with scientific community, we can get the support from them. We can help their set of farmers to have the right technology in their field to grow more, to earn more, right? So this is one example which recently I have captured. This is the physical photograph. You can see the comparative photograph where non-treated adjacent plot and Kirari treated. The amicelbrom, which I was talking in the previous slide, where first molecule was amicelbrom. You can see the late blight control is there, and the new shoots are coming, which are very, very healthy, right? So same field, just see this photograph, and I'll show you one testimony now. So this is the digital creative, you can say, which we have created and we are circulating to all the farmers with a message that आपकी फसल में, आलू की फसल में पछेती झुलसा का जो प्रकोप है वो आ गया है. उससे बचने के लिए आप किरारी का स्प्रे 200 ml प्रति एकड़ अपनी फील्ड में करें, अपने खेत में करें, ताकि आप पछेती झुलसा से फसल को बचा सकें. तो मैसेज भी created. So can you see this now? Anybody can say कि ये visible है page? Yes, sir. It is visible, sir. Okay. If the sound doesn't come na, then let me know. If sound is coming, then ऐसे ही चलने देना, ठीक है? Yes, So sir. this is one example. This is one example of creating a testimonial with L-shaped branding. So this we started earlier. हम पेपर पे हमारे पास टेस्टिमोनियल आता था फार्मर की फोटो के साथ में, तो हमने सोचा यार इसको बदलो, और ये बहुत हो गया टाइम इसको बदले हुए, एंड नाउ वी आर इम्प्रोवाइजिंग कि इसमें और क्या कर सकते हैं. तो दिस इज वन एग्जांपल. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सी दैट एंड लिसन दैट. ऑडियो नहीं आ रहा है क्या?
Okay. Yes, sir. Audio is not. It's not audible. Yeah, it's audible now. Now it is coming. Yes, नमस्कार, sir. मैं Yes, Now sir. Yes, sir. audio. Now, yes, sir. सुबोध कुमार गुप्ता आज अपने साथी अवनीश चंद्रा जी के साथ में रोहतास गांव में आया हूं, जो आगरा जिले में है। और हमारे साथ में यहाँ के अग्रणी किसान चेतन जी हैं, और चेतन जी से हमारे साथी जो है वो पूछेंगे कि आलू की फसल में उन्होंने ऐसा क्या किया कि पछेती जुलसा जो है वहीं का वहीं रुक गया। नमस्कार रोहतास जी, सर नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है तो सर। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपके खेत में पछेती झुलसा आ चुका था जी सर। और फैल रहा था, तो आपने कौन सी दवाई का प्रयोग किया? सर मैंने धानुका की एक किरारी आती है सर, धानुका का किरारी का आपने इस्तेमाल किया है। तो जी। कितना डोज लगाया आपने? इसमें 200 ml प्रति एकड़ के 200 ml की एकड़ के दर से आपने प्रयोग किया है। तो अभी कैसा रिजल्ट लग रहा है? बीमारी रुक गई है? बीमारी रुकी हुई है और इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हफ्ते बाद आप बोल रहे हैं तो एक हफ्ते बाद एक स्प्रे और हाँ, मौसम अगर बदलता है, मौसम बदलता है तो स्प्रे करने की जरूरत है। और बाकी किसान भाइयों को आप आगरा के आसपास के लोगों को क्या मैसेज देना मैं तो ये मैसेज दूंगा, भैया ये धानुका के किरारी है, उसी का यूज करें आप। और ज्यादातर लोगों पे, बड़े किसानों पे 500 लीटर की टंकी है, उसमें आप आधा लीटर किरारी डाल के, और इसी की बेडशीट एक चिपकाने वाली वो आती है, उसको डालें आप और 500 लीटर के हिसाब से टंकी में डाल दें, और इससे रोग आपका रुक जाएगा बिल्कुल। दीपक जी, आप दिखा सकते हैं कि जहां पे स्प्रे हुआ है वहां पे क्या स्थिति थी पहले, और कंट्रोल देखिए। आप आगे की तरफ कैमरा करेंगे तो दिखेगा कि किस तरीके से जो है ये बीमारी जो है वो रुकती हुई जा रही है, और पत्ते हमारे हरे भरे जो है वो नजर आ रहे हैं। नई कलियां भी निकल रही हैं। जहाँ पर बीमारी आई हो वहाँ पे नई नई कलियां ये दिखाइए आप, यहाँ पर कैमरा लेके आइए एक बार दीपक जी। यहाँ पे देखिए कि ये साफ साफ सुनिश्चित करता है कि किरारी के स्प्रे के बाद ऊपर के कल्ले साफ जो है हमें नजर आ रहे हैं, और ये नीचे यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल हो गया, रुक गया। अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो ऊपर के पत्ते भी जो है वो इन्फेक्टेड होते। तो किसान भाइयों को किरारी का स्प्रे जो है वो करना बहुत जरूरी है, ताकि आलू की फसल को पछेती झुलसा से बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आप सभी को दिखाया है, और ये सब डिजिटल टूल्स हम यूज कर रहे हैं। ये फोटोग्राफ थी, वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो अगर कोई किसान है तो वो किसान को ये इमेज पहुंचेगा और उसे पता चलेगा कि यही समस्या मेरे खेत में है, या ये वीडियो पहुंचेगा कि मेरे खेत में यही समस्या है, तो हम मैक्सिमम फार्मर्स को रीच कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक मार्केटिंग कैंपेन भी किया कि आलू की पाठशाला, हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं आर के धुरिया सर, उनके साथ में। तो आलू की पाठशाला आर के धुरिया जी के साथ, तो इसमें हमने 2 एपिसोड अभी किए हैं ऑनलाइन। तो इसका एक, जैसे ये लिंक से आप सब जुड़े हैं, वैसे ही फार्मर्स भी लिंक से जुड़ते हैं। और एट द सेम टाइम वो फेसबुक पे भी हम लाइव हमने उसको किया, ताकि जो हमारे अपने ऑडियंस हैं, फार्मर्स हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी है, कॉलेजेस हैं, वो लोग भी उसको देखें। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो भी फार्मर से कनेक्टेड होगा वो वहां पे फार्मर को नॉलेज से जो है, पाठशाला की नॉलेज से जो है अपग्रेड कर सकेगा। दिस इज अनदर मार्केटिंग द फंडा जो हमने वहां पे लिया, डिजिटल इनिशिएटिव था जो हमने लिया। नाउ क्विकली इन 5 मिनट्स मैं आपको अपनी 14 इयर्स की जर्नी ले करके चलता हूं, जहां पे आप मुझे बड़ा होते हुए देखेंगे। मतलब मेरी जो एज थी, उस एज से जो 14 साल के बाद का सुबोध है वो आप देखेंगे। तो 2010 में ये कहानी शुरू हुई, 1 जून, जब मैंने अपनी जर्नी मॉन्सेंटो के साथ में शुरू कर। दिखाना चाहता हूँ कि आई वांट कि अगर कोई और सुबोध यहाँ पे बैठा है, या कोई और यहाँ पे है, जैसे प्रीति इज ऑल्सो देयर, आई कुड सी नेम यहाँ पे, आप एग्री इनपुट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो, तो दिस इंडस्ट्री इज वेरी वेरी नाइस इंडस्ट्री, वेरी वेरी ग्रेट इंडस्ट्री। ये इसका कॉज जो है बहुत बड़ा है। तो आई टेक यू थ्रू दिस जर्नी ऑफ 14 इयर्स कि मैं, फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो 2010 में एक ये भी समझ में आया कि जो लीफलेट जो है, अगर वो छोटे बच्चों को गाँव में मिलता था तो उससे उनको कितनी ज्यादा खुशी मिलती थी। तो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक लीफलेट देने से बच्चे जो हैं वो इतने खुश हो सकते हैं। मतलब हमारी नीड्स और हमारी डिमांड्स तो आप देखो कि किस लेवल पे है नाउ डेज।
लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनको अगर लीफलेट भी मिलता है, कुछ भी ऐसा टूल मिलता है मार्केटिंग का, तो उससे उनको बड़ी खुशी मिलती है। तो ये कुछ झलकियां हैं जो मैंने कैप्चर करी हैं। वो टाइम था जब लैपटॉप देख करके सब लोग ये देखते थे कि ये इनको मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि बगल वाले गांव में हमने ये किया, तो ये इस तरीके की प्रैक्टिस थी, तो ये आपके यहाँ पे भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का यूज उस समय भी हो रहा था 2010 के बाद में, और सब लोग रेडी हैं, अगर कोई चीज सही है उनकी फील्ड के लिए तो उसको परचेज करने के लिए वो रेडी है। दिस इज द ट्रेडिशनल वे, जब हम फार्मर से कनेक्ट कर रहे हैं और हम फार्मर्स को बता रहे हैं कि उनको कैसे हम उनकी उपज में सपोर्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। तो जो इस सेक्टर में है, फील्ड में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लर्न करना फार्मर के साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था, तो मैंने उस समय मैं सीड इंडस्ट्री में था, तो मैंने 3 गांव का मतलब मैच, 3 विलेजेस का मैंने मैच करा दिया, और उसमें बाउंड्रीज पे सारे पीओपीज जो हैं वो लगे हुए थे। तो सी वहां पे भी मैंने ये वे ढूंढ लिया कि मैं अपने आप को कैसे इन्वॉल्व और एंगेज रख सकता हूँ। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जिस चीज से मोटिवेशन मिलता है उससे हम कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो ये आप वर्ल्ड कप देखेंगे, छोटा सा वर्ल्ड कप बनाया था, और पूरे गांव में ये जो मैच हुआ उससे एक नए लेवल का जो है मार्केटिंग जो थिंग थी वो निकल करके आई, राइट। सो केवीके कृषि विज्ञान केंद्र में मैं आप देख सकते हैं यहाँ 2013 लिखा हुआ है। तो यू हैव टू बी लाइक, बोलते हैं ना कि आपको अपनी विजिबिलिटी पे काम करना है। मैंने 2010 से लेकर के आज तक मैंने अपनी ब्रांडिंग पे काम किया है, और मैं अपनी ब्रांडिंग पे काम कैसे कर सकता हूँ, जब मैं फार्मर्स के लिए कुछ काम करूंगा या उनको कैसे फायदा हो उसके लिए मैं काम कर सकूंगा। तो हर एक स्टेज पे आपको जा करके उसका फायदा उठाना है, और फार्मर्स को कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर काम करना है। तो दीज आर सम ऑफ दी मीडिया कवरेजेस जो उसमें आता था नाम, तो बड़ी खुशी होती थी कि मुनाफे वाली है टमाटर की खेती सुबोध। तो ये मेरे लिए मोटिवेशनल है, एंड आई वांट दैट कि इससे आप लोग भी अपने लिए मोटिवेशन हो। इस डिस्कशन के बाद में अगर 2-3 सुबोध, 2-3 प्रीति अलग अलग जगह पे जाकर के इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे ज्यादा ये सक्सेस इस सेशन का मैं नहीं मानता कि मिल सकता है। तो अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने को, हेलमेट पहनने के लिए हम बोलते थे, सीट बेल्ट लगाने के लिए हम बोलते थे, सेफ्टी को लेकर के, ठीक है। तो ये अच्छा काम जब करते हैं तो फिर अवार्ड्स और रिकग्निशंस भी मिलते हैं। तो इससे मैं मोटिवेट होता था, एंड आई वांट कि आप लोग भी अपने काम को अच्छे से करके मोटिवेटेड रहें। केवीके से भी रिकग्निशंस जो है वो रेगुलर मिले, और धानुका में आने के बाद में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का मौका मिला, किरारी निसोडियम, जो कि 93 मॉलिक्यूल्स हैं, और वो भी कोविड के टाइम पे। तो ये सब लॉन्चेस से रिलेटेड अनियन हर्बिसाइड को लॉन्च करने का मौका मिला। ऑनलाइन वर्ल्ड में भी और फिजिकल वर्ल्ड में भी ये चीजें करने को मिली, राइट। और जब कोविड आ गया था तो हमने सारे फार्मर्स को हमने ट्राई किया कि उन्हें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, और यू वोंट बिलीव कि सारे फार्मर्स को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने में सक्सेसफुल रहे। फार्मर्स हमारे जूम लाइव पे जुड़ते थे, इस इमेज के साथ में एक टेक्स्ट मैसेज जाता था और लिंक जाता था जिसे फार्मर क्लिक करके ज्वाइन करता था। तो ये भी दिख रहा था कि फार्मर्स भी हमारे जूम पे जुड़ सकते हैं, राइट। तो आई एम लखनऊ से भी मुझे रिकग्निशन मिला है बिकॉज ऑफ जो उनके यहाँ पे फेस्ट हुआ था उसमें आई सपोर्टेड। दीज आर सम ग्लिम्स फ्रॉम आई एम अहमदाबाद, जब एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का हमने जो है हमारा प्रोग्राम था। एंड धानुका में भी मैं रुका नहीं, तो जो 2010 में सुबोध था वो आज भी 12 जनवरी 2024 में भी वही सुबोध आपके सामने है। कश्मीर जाने का मौका मिला, व्हेन पीपल सेड कि कश्मीर में एप्पल पे काम करना इज वेरी, तो वी नीड टू वर्क इन एप्पल आल्सो। सो कश्मीर में भी एक्सप्लोर्ड एप्पल, एंड एप्पल में हमारा बिजनेस अप्रॉक्स 5 करोड़ का है आज की डेट में, एंड वी आर डूइंग अमेजिंग वर्क इन एप्पल क्रॉप आल्सो नाउ। वहां पे भी हमने साइंटिफिक कम्युनिटी से कनेक्ट किया,
जो वहाँ पे थी फार्मर मीटिंग्स हमने वहाँ पे करी, और हिमाचल प्रदेश में भी हमने एप्पल जो है उसमें हमने काम किया। ये कश्मीर की कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप देख रहे हैं। एनआरसीजी साइंटिस्ट जो हमारे हैं, आरजी सोमकुमार सर हैं, सुजॉय साहा सर हैं, सर के साथ में भी हमें जाने का मौका मिला, कोलैबोरेट करने का मिला, बिकॉज देर इज वन एनआरसीजी एनेक्शर 5 हम बोलते हैं। तो हमारा जो ग्रेप्स का जो भी प्रोडक्ट है वो एनेक्शर 5 में होना जरूरी है। तो विद देयर सपोर्ट एंड विद देयर एक्शंस हमने ग्रेप्स में अपना धानुका को हमने एस्टैब्लिश किया, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लाइक दिस प्लेटफॉर्म जाने का मौका मिला। सो द प्लांट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग टू ट्रांसफॉर्म इंडिया थ्रू एग्रीकल्चर, एंड वी ऑल हैव टू टुगेदर मेक दिस प्लांट मोर स्ट्रॉन्गर। और ये हम सब ब्रांचेस मिलकर के जब एग्री सेक्टर के लिए काम करेंगी तो दिस प्लांट विल डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर। एंड द फाइनल थिंग इज यू कुड सक्सीड नॉट जस्ट बाय इनोवेटिव आइडियाज बट हाउ यू लीड योर टीम। सो सी, अगर आपकी टीम को आपने लीड करना सीख लिया, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। I want you to be a good leader and at the same time be passionate. आज आप जो passionate हो, 10 साल बाद भी वही passion, या till the time we are breathing, वो passion हमारे में हमेशा बराबर होना चाहिए। So this is all from my side. Now I request everyone to switch on your cameras and start asking questions if you have. Hello, sir. Hi, Preeti. Yes, sir. Sir, it was a wonderful session. It was a highly motivating and inspiring session, sir. So definitely, it was more than the expectations that in the first in the first instance when you talked about like what do you expect from the video. So it was definitely more than that, sir. So I'm very sure that our participants have not just learned, they have enjoyed the session. So it's my request that if any participant is having any query, so they can unmute themselves and they can talk to you, sir. Yeah. So meanwhile, I'm checking the chat box as well. I think there is no question in the chat box, so we'll just directly invite our Hello, participants, sir. sir. Hello, ma'am. Yeah, Hello. yeah, Jeevan. Sir. Uh, as you working in the chemical industry, sir, and we nowadays we seeing that the government also promoting the natural farming in our Right. country. Right. How you look as a chemical industry person, and the changing environment due to which we see that the minor pest or minor diseases are becoming a major problem in the agriculture industry. How you look the agriculture in future in India, as government scenario is natural farming and we agriculture people hai. Now I am working in KVK. I am SMS plant protection KVK. So when we face the farmer at the field level for the pest and disease management or nutrient management, then the question arises, how we tackle the both things at the same time. Yeah. What is your opinion, sir? Jeevan, excellent, amazing question you have asked. And I also stressed this thing during my presentation that we have seen the situation of Sri Lanka. At the same time, biologicals, if we are talking, or any organic thing we are talking, that takes time. If I am getting ill, I need to take medicine. I have to take that medicine at any cost, because that medicine will save my life, right? So when we are doing Kisan Chopal with scientific community, where different KVK people and everybody is coming, they're talking about natural farming, right? At the same time, what our stress is on doing the natural farming also. At the same time, if situation is not right for that, and you have to save your crop, you don't have any other option. You have to go for chemicals. And chemicals, like, see, when we are taking the name chemicals, it doesn't mean that it will destroy everything, or chemicals जो है वो सब खत्म कर देगा या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. So ऐसा नहीं है. The thing is कि if we are using a green chemistry technology, and if we are using a blue triangle chemistry, and that technology is saving your crop in less dose,
और उसका पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल PHI इज लेस 5 days, 10 days, 20 days, तो वो आपकी क्रॉप के अंदर भी, प्रोड्यूस के अंदर भी जब वो हार्वेस्ट होगा तो वो PHI जो है वो नहीं होगा, तो वो निकल जाएगा उसमें से। लाइक सेम हैपन्स इन ग्रेप्स क्रॉप। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, हम अपने ग्रेप्स को इंटायर केमिकल्स से हटा करके नेचुरल फार्मिंग में नहीं ला सकते, या किसी भी क्रॉप को नहीं ला सकते। अगर हम ले आएंगे तो फिर हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो सकता है। बट एट द सेम टाइम मैसेज ये क्लियर है कि हमें नेचुरल फार्मिंग तो करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करे। हमारी प्रोडक्शन को, हमें फूड सिक्योरिटी को हमें इंश्योर करते हुए अपने सॉइल को जो है वो राइट क्वांटिटी में, हमें बायोलॉजिकल्स हो गया या मतलब होम्योपैथिक दवाई के साथ में, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो रही है आयुर्वेदिक के साथ में जरूरत पड़ रहा है तो वो लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसमें भी राइट केमिकल का यूज करना बहुत जरूरी है, ट्राइड डोज। तो वही हम कर रहे हैं कि सही टेक्नोलॉजी, जो जापानीज टेक्नोलॉजी है, फार्मर्स को हम बता रहे हैं। अगर उसको जरूरत है, जैसे लेट ब्राइट का मैंने एग्जांपल दिखाया वीडियो का, पूरा क्रॉप खत्म हो जाएगा 72 आवर्स के अंदर में अगर फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस का अटैक आता है। तो टोमेटो क्रॉप में भी आता है, पोटैटो में भी आता है। विद इन 3 days पूरी क्रॉप खत्म हो जाएगी, फार्मर कुछ नहीं कर पाए। तो इन दैट केस उसको अपनी क्रॉप को बचाना है, ताकि वो पोटैटो इंश्योर कर सके कि हमारे देश में पोटैटो का जो प्रोडक्शन है वो इंश्योर कर सके, तो उसको फिर केमिकल वेज में जाना ही पड़ेगा। सो जीवन 100% हम कन्वर्जन कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट आई एम सेइंग कि वो हाथ मिला के साथ में चलना है, कि अगर मेरे को सलाद भी खाना है तो मैं सलाद भी खाऊं, मेरे को रायता भी लेना है तो मैं रायता भी लूं, तो वो सब साथ में मिलके चलेगा। नहीं नहीं सर, बराबर है आपका, लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि आपने मेंशन किया बीच में कि जो आप थाली खा रहे हो वो विष से भरी है, ऐसा जो प्रचार हो रहा है आज के लेवल में, वो जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन ऑफ द क्रॉप, ये दोनों देख के अपने को मोल्ड होना चाहिए। बिल्कुल, बट बिल्कुल। जो प्रचार एक तरफ हो रहा है नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रमोट करने के लिए, वो ये गलत अच्छा है। है, ये अच्छा है। यस सर। ये जो प्रचार है गवर्नमेंट के हर प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे ना, तो वो ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, एंड वी आर सपोर्टिंग देम। हमारे पास उसके लिए भी चीजें हैं जो हम फार्मर्स को, जैसे मैंने एंडोमाइकोराइजा की बात करी सॉइल के लिए, तो हमारे पास एंडोमाइकोराइजा, हम ऐसा प्रोडक्ट भी लेकर के आने वाले हैं जो आप 100%, मतलब 95% एंडोमाइकोराइजा उसमें होगा। और एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा का कॉम्बिनेशन विद 90% ऑफ एंडोमाइकोराइजा, दैट इज ऑलरेडी देयर इन मार्केट माइकोर के नेम से, फॉर सॉइल हेल्थ एनहांस करने के लिए। तो वी हैव दोस प्रोडक्ट्स आल्सो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बायोलॉजिकल जो डिवीजन है ना, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉरवर्ड जो है स्टूडेंट्स के लिए भी आने वाली है, क्योंकि जो नेचुरल फार्मिंग है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो दैट इज देयर। नमस्कार सर, आई एम प्रियव्रत पांड्या फ्रॉम वेस्ट बंगाल। या दादा, बोलिए दादा। हाँ, बोल रहे हैं कि मेरा दो बातें हैं, ऐसी है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 60 साल से, वो हरी क्रांति वाला सबूज विप्लव के लिए, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है, उसमें से हम लोग केमिकल फार्मिंग वगैरह, वो जो केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड हम लोग अप्लाई करते हैं, वो तो ग्रो मोर फूड्स एंड हाइब्रिड क्रॉप्स के लिए। इसमें क्या हुआ, जो फार्मर्स को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत बढ़ गया, और प्रोडक्शन लेवल भी इतना, जितना लेवल तक बढ़ सकता है उसके लेवल तक बढ़ा है, अभी वो डिक्लाइनिंग फेज में है। इसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अभी जो सरकार सोच रहे हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के बारे में आप बोल रहे हैं, श्रीलंका का जो हाल है, तो मेरे ख्याल से श्रीलंका का जो हाल है वो तो उसका मिस प्लानिंग है, मिस गवर्नेंस है। वो केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के वगैरह वो बिल्कुल सीधा बात नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। और चाइना का रिलेशन है, इंटरनेशनल ये है, डिप्लोमेसी है। तो हम लोगों का जो अभी स्थिति है, सरकार जो बोल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के लिए आने की,
ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग लाने से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो हट जाएगा। ये तो बिल्कुल प्रमाणित सत्य है। ओके दादा, इसमें चीज ये है कि हम जैसे मैं बात करूं तो जो हम जब स्प्रे फार्मर को करते हैं या उसका प्रोडक्शन जो है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए उस चार्ट में, उसमें हम फार्मर के साथ में हार्वेस्ट डेज तक जाते हैं कि अगर वो किसान प्याज अगर अपने खेती से निकाल रहा है या आलू अपने खेत से निकाल रहा है, तो उसको 30% के आसपास जो है इंक्रीज इन यील्ड जो है वो मिल रहा है। एट द सेम टाइम सॉइल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए कि सॉइल के अंदर जो सिचुएशन है उसको सही करने के लिए हम उनको वो माइक्रोराइजर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं या वो नॉलेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हम कम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं कि अगर वो एक बीमारी के लिए स्प्रे कर रहा है तो वो 4-5 स्प्रे कंटिन्यूसली करे जा रहा है। सब्जी वाला जो आप जानते होंगे, सब्जी वाला जो किसान है वो लगातार स्प्रे करता रहता है, कंटिन्यूअस स्प्रे उसका चलता रहता है। लेकिन अगर उसका स्प्रे 5 दिन या 4 दिन रुक जाता है या 10 दिन रुक जाता है, तो उसका जो काउंट ऑफ स्प्रे है वो 4-5 स्प्रे रुकने से उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम होगा। एट द सेम टाइम वी आर इंश्योरिंग कि उसका क्वालिटी प्रोड्यूस जो है उसे मिले, क्वालिटी हार्वेस्ट मिले जो मंडी में सबसे ज्यादा सबसे पहले जाकर के बिके। तो इस तरीके के प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट है धानु का दे रही है फार्मर को, जो उनके कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम कर रहे हैं, जो उनका करंट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। एट द सेम टाइम प्रोड्यूस जो है वो मैक्सिमम आए जो वो आ सकता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो अगर मैं ग्रेप्स की बात करूं तो एक्सपोर्ट क्वालिटी ग्रेप्स फार्मर्स का आए, रेसिड्यू फ्री आए, तो रेसिड्यू ताकि वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करके बेनिफिट ले सके, ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फार्मर्स चूज कर रहे हैं। वेजिटेबल्स की अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि उनको कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन मिले, क्वालिटी प्रोडक्शन मिले और सबसे जल्दी मंडी में सबसे पहले जाकर के बिक जाए। तो इस तरीके से हम फार्मर्स को जो है गाइड कर रहे हैं और उनको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। आपका बात बिल्कुल सही है, आपके मुझे बात से मैं एग्री कर। ना बोल रहे कि रेसिडुअल टॉक्सिसिटी के बारे में आज जो बोल रहा है, जो आपका जो केमिकल है, आप हाँ बोल हाँ रहे हैं कि 5-6 दिन के बाद ये रेसिडुअल टॉक्सिसिटी खत्म हो जाता है, ऐसे होता है क्या? आप, ये टोटली डिपेंड करता है दादा कि उस दवा का जो पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल है, पीएचआई है, वो कितना है। ठीक है, हाँ, आप देखिए ठीक है। जैसे कि ये तभी होगा जब उस दवा का पीएचआई जो है वो उतना होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज। अब इन डेज को देखते हुए फार्मर को स्प्रे करना, गाइड करना बहुत जरूरी है कि जब उसका प्रोड्यूस निकल रहा है, जैसे ग्रेप्स में फार्मर जो है अपने मैक्सिमम स्प्रे 55 डेज तक करता है, उसके बाद में वो फिर बायोलॉजिकल्स पे आ जाता है, क्योंकि फिर वो स्प्रे करेगा तो उसका प्रोड्यूस जब सर तक वही निकलेगा। वही बात बोल रहे हैं। हमारा देश का जो फार्मर्स है, इन लोगों को इतना अवेयरनेस कौन देगा? जो यहाँ पे आपको एक बात बताता है, उस बेंगल में क्या होता है। जब शुरू शुरू में ऑर्गेन केमिकल फार्मिंग शुरू हुआ, तो पोटैटो जब आलू को उगाते थे, वो लोग दो दो 2 बैग्स को एनपीके और 1 बैग का यूरिया देते थे। अभी यहाँ पे 5 बैग का एनपीके इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है? ये सेहत के लिए अच्छा है क्या? नहीं दादा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब यहीं पे हम लोगों का रोल काम आता है कि हम जितने फार्मर्स तक पहुंच सकें, कि अगर कोई गांव में 3 बैग डाल रहा है तो दूसरा सोचता है कि इसने 3 डाला है तो मुझे 4 डालना है या मुझे 5 डालना है। तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। और ये होता है कि, और उससे क्या होता है कि आप देखिए सॉइल का हेल्थ भी खराब होता है और इसीलिए रेजिस्टेंस जल्दी आ जाता है दवाइयों में। नहीं, सेल का तो खराब होता है, फिर भी हम हाँ आपको बोलते हैं, जो मेरे को जानकारी है, जो हम्म ग्रीन हाउस जो गैस जो निकालता है, जो इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल से, वो हमारा खेती वगैरह से ज्यादा निकालती है, वो केमिकल हम्म की फार्मिंग के लिए। तो हम्म इसलिए सोचना जरूरी है। इसलिए अभी सरकार भी नेचुरल फार्मिंग के बारे में सोच रहा है। कि अभी गुजरात में तो नेचुरल फार्मिंग का तो यूनिवर्सिटी बन गया है, हम्म ऑर्गेनिक खेती का। वहाँ पे हिमाचल, गुजरात, राजस्थान में बिल्कुल चालू हो गया अभी। वहाँ पे भी एक्सपोर्ट भी होता है। और आप जो बोल रहा है ग्रेप्स का जो फार्मर्स है, वो
पैसे वाला है, उन लोगों को ज्ञान है, और अगर इसमें पेस्टिसाइड रह जाए टॉक्सिसिटी, वो तो बाहर नहीं जाएगा, इसलिए उसको 55 डेज के बाद बंद कर देता है। उसके बाद बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है वो देता है। वो सही बात है, इसलिए उसका हाँ ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। बिल्कुल वही थैंक चीज यू मैं सर, कह रहा हूँ थैंक कि यू, हाँ, थैंक यू इसीलिए सर। इसीलिए मैं यहाँ पे सभी को यही इंस्पायर कर रहा हूँ कि आप सही नॉलेज हमारे फार्मर्स को पहुंचाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं पे रोल होता है मेरा आपका सभी का कि अगर हम कहीं पे फार्मर मीटिंग कर रहे हैं तो उसको वो सही नॉलेज ज्ञान जो है वो उसको दें। ये नहीं कि अगर आपने ये दवाई डाली तो ऐसा करो थोड़ा सा ml और बढ़ा दो तो कीड़ा और जल्दी मर जाएगा, ऐसा नहीं है। सही तो है। तो वो नुकसान ही करेगा। तो हमें जो सही मात्रा में सही समय में सही दवा का या कोई भी बायोलॉजिकल या कुछ भी हम यूज कर रहे हैं उसका प्रयोग करना जरूरी है। अगर मुझे प्यास लगी है, मैं 1 गिलास पानी पी रहा हूँ, मैं 3 गिलास पानी पीऊंगा तो वो फिर मेरे लिए नुकसान करेगा किसी भी हालत में। तो और इतना फार्मर को कौन सिखाएगा, स्टेट दादा लेवल हम, पर जो ऑफिसर हाँ, है अभी सारी जो कंपनीज सारी कंपनीज के लोग यही काम कर रहे हैं कि जितना पहुंच सके उतना पहुंच करके ऐसे प्लेटफॉर्म से जैसे जस्ट एग्रीकल्चर ने कृषि मंथन रखा है, इसमें से अगर 2 लोग भी एग्री इनपुट सेक्टर में आएंगे और वो अगर जाकर के 10 गांव में जाकर के बात करेंगे तो आज जो आप कह रहे हो ना वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जरूर। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है वो तो हाँ मेरे को दादा, भी मालूम है। एग्री थैंक एग्री। यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर डेलीवेशन सर। थैंक यू दादा, बहुत आपने सही बात करी। प्रीति, सर ओवर टू यू। हेलो या सारांश। सर, एक्चुअली आई एम अ बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट एंड आई वांट टू आस्क दैट सर, सर जैसे आपने अभी प्रेजेंटेशन में बताया कि सर हाँ जैसे आप को आपका ये जो प्रोडक्ट है सर उसको यूज करेंगे तो सर पेस्टिसाइड वगैरह खत्म हो जाएंगे। तो सर उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट के जो सर लॉसेज हैं जैसे कि लैंड खराब हो जाती है या सर अदर भी जो लॉसेज होते हैं सर वो चीज का कैसे क्योर करा जाए? सारांश, ये मिथ है कि अगर आप राइट डोज पे राइट सिचुएशन पे अगर केमिकल यूज कर रहे हो तो उससे आपकी पोस्ट लॉसेस जो है या आपकी लैंड को नुकसान हो रहा है। दिस इज एंटायरली मिथ। नुकसान कब होता है? जब आप गलत मात्रा में यूज करते हो और सही समय पे यूज नहीं करते हो। जब आपको जो चाहिए वो नहीं दे करके कुछ और दे रहे हो तब जाकर के प्रॉब्लम होती है। अगर हम सही समय पे सही चीज को यूज करेंगे, राइट वे में यूज करेंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा, उससे फार्मर को फायदा ही होगा। फॉर एवरीवन, अगर आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सुबोध गुप्ता, यू विल सी, आप लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों या कुछ भी रिलेटेड टू इंटर्नशिप भी हो तो भी आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। वी हैव internships also which will be coming in going future, so that opportunity also can be provided for everyone। और गोइंग फॉरवर्ड मेरे पास कुछ पोजीशंस अक्रॉस इंडस्ट्री कुछ होगा इंफॉर्मेशन विच आई कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, so I would be happy to connect with each and every single person here। Yes, sir. Thank you so much, sir. We will share your details with our participants in the group also, sir. So I think, sir, we can call it a day. I'm very much thankful to you for a wonderful session that we had, sir. And I'm very much, sure that our participants must also have enjoyed and learned from your session. So, from the on the behalf of Team Just Agriculture and our participants, I thank you once again, sir, for joining. Thank you so much, sir. Thank you, Preeti. Thank you for giving me this opportunity to interact with such a diverse set of Yes. audience here today. So thank you so much, everyone, for being there for 1 hour, more than 1 hour. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. So, dear participants, this is for today. So, we will call it a day and we will meet again tomorrow with the new sessions. So, till then, have a nice day. Good night.